चैप्टर है जो क्वेश्चन करता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, क्यों पढ़ी जाए इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट एंड व्हाट शुड वी लर्न इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, उस पर ये चैप्टर है, राइट बेटा? सो द क्वेश्चन इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और उसमें हमें क्या पढ़ना है, दैट इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चे। मैक्रो मीन्स बिग, माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो मैक्रो का इंप्लीकेशन हो जाता है बिग और माइक्रो का इंप्लीकेशन हो जाता है स्मॉल। सो whenever we talk about macroeconomics, जब भी हम macroeconomics की बात करते हैं, it means I am taking the country as a whole. मैं पूरे नेशन की एक साथ बात कर रही हूं. I am talking about nation as a whole. So we can say that macroeconomics, it is the study about the structure and performance of the national economy. जब हम पूरे नेशन की एक साथ बात करते हैं, इंडिया का जीडीपी कितना, यूएस का जीडीपी कितना, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी, वी आर टॉकिंग अबाउट नेशन एज अ होल ना, हम पूरे नेशन की एक साथ बात कर रहे हैं. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट नेशन एज अ होल, उसको बोल दिया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट बेटा? सो वी कैन से दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स is the study of the structure and performance of the nation as a whole. जब हम पूरे के पूरे देश की एक साथ बात करते हैं, when we talk about nation as a whole, और हम उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, तब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो. क्लियर है बच्चे? ओके. अब हम बात करते हैं इश्यूज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. किस किस इशू पे बात करनी होगी अगर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, किस किस बारे में हमें बात करनी चाहिए? सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट determines nations long run economic growth. अब अगर मैं सोचूं कि यार इंडिया 1991 में कैसी थी और इंडिया आज कैसी है, और अब मैं पूछूं कि अच्छा इंडिया 2050 में कैसी होगी, सो आई एम ट्राइंग टू आस्क कि लॉन्ग रन में इंडिया की ग्रोथ कैसी. हाँ, 1950 से आज तक हमने कितना ग्रो किया और आज से लेके 2050 तक हम कितना ग्रो करेंगे, व्हाट विल बी द ग्रोथ ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 6 मंथ, इन द नेक्स्ट 50 years, इन द नेक्स्ट 20 years, उसे बोल देते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव. अब ये किस पर डिपेंड करेगा, कैसे पता चलेगा कि इंडिया ज्यादा ग्रो करेगा या चाइना ज्यादा ग्रो करेगा या यूएस ज्यादा ग्रो करेगा? किन फैक्टर्स पे इस बात को हम एस्टिमेट कर सकते हैं? क्या वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा, क्या वो लिविंग स्टैंडर्ड्स पे डिपेंड करेगा, क्या वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे डिपेंड करेगा, एक्सेट्रा. तो किस बेसिस पे मुझे पता चलेगा, व्हाट विल बी द बेसिस टू एस्टिमेट लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ? लॉन्ग रन में इंडिया कैसा परफॉर्म करने वाली है, हाउ विल अ कंट्री परफॉर्म, वो क्या फैक्टर्स हैं, क्या चीजें बताएंगी कि कंट्री कैसा परफॉर्म करेगी? दैट इज बच्चे द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी वांट टू एड्रेस. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमें आंसर करना है कि व्हाट डिटरमाइंस नेशंस लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ. नेशन की लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, ये हमें पहले जानना जरूर. सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट कॉजेस
nations economic activity to fluctuate। थोड़ा सा समझो जरा बात को बेटा। न्यूज में कभी कभी सुना है ना कि दिस ईयर अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज वेरी हाई इन इंडिया, इस साल तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी इंडिया में, राइट? या वी हैव गॉन अहेड एंड वी हैव हर्ड कि इस साल ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन विल बी वेरी हाई, बहुत महंगाई आने वाली है ना? तो बेटा क्वेश्चन इज कि व्हाट विल गो अहेड एंड व्हाट विल डिटरमाइन कि कैसे इंडिया परफॉर्म कर रही है, ये फ्लक्चुएशन क्यों आ रही है, कैसे पता चलेगा कि क्या इंडिया में इन्फ्लेशन हाई होने वाली है या लो होने वाली है, क्या महंगाई आने वाली है या महंगाई नहीं आने वाली है, ये चीजें हमें कैसे पता चलेंगी? ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ टू फ्लक्चुएट? इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज पे डिपेंड करती है और कब कब फ्लक्चुएट करती है, वो फैक्टर्स जानना वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। दैट इज द एम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट बेटा? नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट? मैक्रो इकोनॉमिक्स ये क्वेश्चन भी पूछता है कि अनएम्प्लॉयमेंट किस रीजन से हो रही है, किस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में है। क्यों ऐसा है कि अगर मैं कंट्री ए की बात करती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, और जब मैं कंट्री बी की बात करती हूँ तो वहां पे सबके पास जॉब है। तो ये कैसे पता चलेगा कि किस कंट्री में जॉब है और किस कंट्री में जॉब नहीं है? हाउ विल वी गो अहेड एंड नो दैट? दैट इज द थर्ड थिंग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आंसर करती है, राइट? सो द थर्ड क्वेश्चन दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स आंसर, दैट इज व्हाट कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से होती है और किस रेट पे रहती है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट 2% रहेगी, 4% रहेगी, कितनी रहेगी ये कंट्री में? वो मैक्रो इकोनॉमिक्स आंसर करती है, राइट बेटा? बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आंसर करेगी, व्हाट कॉजेज prices to rise? अब थोड़ा सा समझो। प्राइजेस जब बढ़ते हैं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। पहले लिख लेते बच्चे, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। माने फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि 2010 में ना एक चॉकलेट का पैक 10 रुपीज का आता था, एक किटकैट, उसमें 4 स्लाइसेस होते थे, हाँ। और 2020 में वही चॉकलेट का पैक 20 रुपीज का आ रहा है। तो प्राइसेस हैव डबल्ड इटसेल्फ ना, प्राइस डबल हो गए हैं। तो किस वजह से इन्फ्लेशन आई है? क्या वो रीजन है कि एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आती है? दैट इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स विल आंसर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बताता है व्हाट कॉजेस प्राइसेस टू राइज, किस वजह से इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ते। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछता है, हाउ डज बीइंग पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम अफेक्ट नेशंस इकोनॉमीज? देखो बच्चे, दो तरीके की इकोनॉमीज होती हैं। वन is called a closed economy. But a closed economy is that economy which does not trade with the rest of the world. तो वो इकोनॉमी जो अपने अंदर ही अंदर सारे काम करती है, अपने अंदर ही प्रोड्यूस करती है, अपने अंदर ही कंज्यूम कर लेती है। दैट इकोनॉमी विच डज नॉट ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो बाहर के देशों के साथ कुछ भी उसका लेन देन नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। और वो इकोनॉमी जो बाहर के देशों के साथ ट्रेड करती है, जैसे इंडिया, बच्चे इंडिया
बाहर से पेट्रोल खरीदती है, बाहर अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सेल करती है, बाहर अपनी सर्विसेज देती है। सो द इकोनॉमी विच ट्रेड्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो इकोनॉमी जो बाहर के देशों के साथ लेन देन करती है, दैट इकोनॉमी विच टेक्स एंड सेल्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बेटा दैट इज कॉल्ड एज ओपन इकोनॉमी। उसको हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। हाँ बेटा, क्लियर हुई ये बात? अब समझो, we are saying that macroeconomics tells us how being part of global economic system affect nations economy। मतलब जब मैं closed economy से open economy बनती हूँ, when I go from being closed to open economy, जब मैं close से open बनी तो कैसे मेरी इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा। जब इंडिया, अभी तक इंडिया किसी के साथ भी ट्रेड नहीं कर रही थी, ना यूएस के साथ थी, ना यूके के साथ थी, किसी के साथ भी ट्रेड नहीं कर रही थी। अब इंडिया ने बोला कि ठीक है, हम आपसे चीजें खरीदेंगे, आपको चीजें बेचेंगे। तो इससे इंडिया की इकोनॉमी में कैसे फर्क पड़ा? हाउ इज इट अफेक्टिंग इंडियाज इकोनॉमी? वो इंडिया की इकोनॉमी को कैसे फर्क पढ़ाता है? दैट इज द क्वेश्चन विच वी आर आस्किंग। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मैक्रो इकोनॉमिक आंसर्स, कैन गवर्नमेंट पॉलिसी be used to improve nations economic performance? ये क्या बोल रहे बच्चे? ये बोल रहा है कि क्या गवर्नमेंट कुछ कर सकती है जिससे नेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए? कुछ भी। क्या गवर्नमेंट जब फ्लाईओवर बनाती है तो उससे लोगों को इनकम मिलती है? क्या गवर्नमेंट जब कोई कोई क्राइसिस आ जाता है, जैसे कोविड-19 आ गया था, तो क्या उस टाइम पे गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी जिससे चीजें इंप्रूव हो पाए? तो क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज यूज हो सकती हैं उसके इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन गवर्नमेंट पॉलिसीज बी यूज्ड? क्या हम गवर्नमेंट की पॉलिसी यूज कर सकते हैं उस नेशन को इंप्रूव करने के लिए? ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इधर मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल में ईस्ट एशियन टाइगर के बारे में बताना चाहूंगी। ईस्ट एशियन टाइगर में हमारी इकोनॉमीज आती हैं, जैसे सिंगापुर, मलेशिया। अब इन इकोनॉमीज ने क्या किया ना बच्चे, यहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों की एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया, लोगों की एजुकेशन को इंप्रूव करना चाहा, और उसकी वजह से इनका जो इकोनॉमी का जीडीपी है, जीडीपी मींस व्हाट, इकोनॉमी की जो इनकम है, वो मेनी फोल्ड्स इंप्रूव हो गई, वो बहुत ज्यादा बेटर हो गई, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो ये ईस्ट एशियन टाइगर ने गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से उन्होंने बोल दिया एजुकेशन, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, हम सबको पढ़ाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट की एजुकेशन की पॉलिसीज की वजह से क्या हो पा रहा है, यहाँ के लोगों को एजुकेशन मिली, जिसकी वजह से उन लोगों की इनकम बढ़ी, जिसकी वजह से इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ा। राइट? सो यस, हमें ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होंगी, will there be will the government policies be such that it can improve the economy of the country, कि वो एक कंट्री की इकोनॉमी को इंप्रूव कर। क्लियर हो गई बच्चे बात? ओके, अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ की। लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, बच्चे लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? बेसिकली क्या कभी ऐसा हुआ है, अब बहुतों के साथ अभी तो नहीं हुआ होगा बच्चा, मैंने भी बहुत रिसेंटली जाके बाहर ये देखा, इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम। क्या होता है कि जब हम किसी बाहर की कंट्री में जाते हैं ना, तो हमें ये देखने को मिलता है कि वो कंट्री तो एडवांस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी आपको दुबई जाने को मिले,
तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ तो यार क्या कार्स चल रही हैं, बहुत ही अमेजिंग कार्स हैं। हाँ, या क्या क्या रियलाइज होगा हमें? हमें रियलाइज होगा कि यार यहाँ पे तो बहुत बहुत ही लोगों की इनकम तो बहुत ही हाई है। हाँ, या फिर हमें क्या रियलाइज होगा कि यार यहाँ पे तो बिल्कुल ही क्राइम नहीं हो रहा। यहाँ पे तो मैं अगर अपना एक एक रिसर्च हुई अभी, एक रिसेंटली आई वाज सीइंग दिस थिंग, जहाँ पे क्या बोला जाता है कि अगर आप दुबई में अपनी कार के अंदर एक बैग भूल जाओ, तो किसी भी तरीके से आपको ट्रेस करके आपका बैग आपको वापस कर देंगे। मतलब कोई आपका बैग चोरी नहीं करेगा, आपके बैग को कुछ नहीं होगा, वो बैग आपको वापस मिल जाएगा। तो लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कैसे देखा जाता है कि हर देश में जो ग्रोथ है वो बहुत ही अलग है, और ऐसे कैसे देखा जा रहा है कि यूएस जो है वो बाकी देशों से बहुत आगे चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि दुबई फास्ट फास्ट ग्रो कर गया? ऐसा क्या अलग कर रहे हैं ये लोग? क्या चीजें हैं जो हम वहां देख रहे हैं जो डेवलपिंग नेशन अभी भी नहीं कर पा रहे हैं? तो ये जो हमारा लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ का टॉपिक है, ये यही पूछा है कि क्यों हो रहा है कि कुछ नेशंस तो बहुत रिच होते जा रहे हैं, बहुत अमीर होते जा रहे हैं, दूसरे नेशन उतने रिच नहीं हो पा रहे हैं। ये कौन सा फैक्टर है कि रिच और पुअर नेशंस के बीच में डिफरेंस आ पा? ठीक है, तो लेट्स राइट दिस डाउन बेटा। तो इसमें क्या है? फ्रॉम, प्लीज राइट डाउन, मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, there is difference between डेवलप्ड, डेवलप्ड को ऑथर रिच बोल रहा है बच्चों, रिच नेशन एंड डेवलपिंग नेशन। हाँ बेटा, तो ऑथर बोलते हैं कि देखो रिच नेशन और डेवलपिंग के नेशन के बीच में डिफरेंस तो है। अब उसने देखा कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, यूएस का आज तक का पूरा ग्रोथ पैटर्न हम देखने की कोशिश करते हैं। तो उसने इवेल्युएट किया कि यूएस का जो ग्रोथ पैटर्न है ना, कैसा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि यूएस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। वाई इज यूएस ग्रोइंग, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसमें ऑथर को रियलाइज हुआ कि पहला रीजन ये रहा है कि यूएस की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है, राइजिंग पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है? तो बेटा, देयर इज कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। थोड़ा सा समझते हैं इस बात को, डेमोग्राफिक डिविडेंड। बेटा ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब एक नेशन शुरुआत करता है अपनी, तो शुरुआत में ना इसके पास बहुत सारे ओल्ड एज के लोग होते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं, और जो वर्किंग पॉपुलेशन है ना, वर्किंग एज पॉपुलेशन, वो बहुत ही लिमिटेड होती है। तो जब एक नेशन अपनी शुरुआत करता है, व्हेन द नेशन स्टार्ट्स, उस टाइम पे उसके पास बूढ़े लोग बहुत ज्यादा हैं, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, पर वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ये सारे के सारे ना इस वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है। तो शुरू में ये देखा जाता है कि जो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स हैं वो बहुत हाई है, हाई डिपेंडेंट्स, बट जो नंबर ऑफ वर्किंग है, वर्किंग एज पीपल है, वो लो है बेटा। ऐसे में एक देश कभी ग्रो नहीं करेगा। तो ऑथर ये बोलता है कि यूएस में ऐसा देखा गया कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो बहुत ही स्टेडी थी। स्टेडी मतलब कांस्टेंट थी, एक कांस्टेंट वर्किंग एज पॉपुलेशन थी। ये देखा जा रहा था कि हाँ, हमेशा इतने लोग तो काम कर ही रहे हैं, ये लिमिटेड नहीं थी, ये बढ़ रही थी। तो क्योंकि ये लोग बढ़ रहे थे, तो अगर ज्यादा लोग काम करने के लिए होंगे, इफ आई विल हैव मोर पीपल टू वर्क, तो क्या होगा बच्चे? देयर विल बी मोर आउटपुट दैट विल बी क्रिएटेड।
So we saw that there was high working age population or a steady working age population, and this meant that there was continuous increase in the output of the economy. राइट बेटा? तो पहली चीज क्या देखी गई? ये देखी गई कि पॉपुलेशन प्रॉपर थी, और कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा थी यूएस में? वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा थी, और क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा थी तो कंटिन्यूअसली आपका इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ रहा था, इकोनॉमीज आउटपुट वाज इंक्रीजिंग। ये पहली चीज हो गई बेटा। बेटा पॉइंट नंबर 2 क्या देखा गया? हमने ये देखा कि ना ही सिर्फ पॉपुलेशन ज्यादा थी, पर आउटपुट पर यूनिट लेबर वो भी बढ़ रहा था। सो आउटपुट पर यूनिट लेबर वाज इंक्रीजिंग। अब बेटा आउटपुट पर यूनिट लेबर कब बढ़ता है? वो तो तब बढ़ता है ना अगर लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। खुद सोचो, आज तक मैं 10 यूनिट्स बनाती थी, कल मैं 15 यूनिट बना पा रही हूँ, मतलब मशीन बहुत बेटर हो गई होगी, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाई। एंड मेरी प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ पाई? मे बी आपने अच्छी टेक्नोलॉजी दे दी मुझे। सो व्हाट वाज सीन वाज दैट आउटपुट पर यूनिट लेबर वाज इंक्रीजिंग। और ये आउटपुट पर यूनिट लेबर का बढ़ने का मतलब ये था दैट एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी was increasing। हाँ बच्चे, ये टेक्नोलॉजी की वजह से भी हो सकता है, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स प्लेड अ रोल। तो ये देखा गया कि अरे सेम वर्कर जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, वो ज्यादा काम कर पा रहा है, तो इसलिए भी धीरे धीरे यूएस जो है वो डेवलप्ड बनना शुरू हो गया। तो बच्चे इसमें ना द ऑथर हैज गिवन यू अ डायग्राम। उस डायग्राम में ऑथर ने यहां पर ईयर लिया है और यहां पर ना आउटपुट लिया है, एंड द डायग्राम इज अपवर्ड स्लोपिंग। मतलब विद टाइम अगर मैं यहाँ 1870 ले लेती हूँ और अगर मैं यहाँ पे 2008 ले लेती हूँ, तो विद टाइम जो हमारा आउटपुट था वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था, इट वॉज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो दो चीजें हुई। क्या क्या चीज हुई बेटा यूएस में? फर्स्ट, वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जो लोग काम कर रहे थे वो प्रॉपर थे, डिपेंडेंट कम थे, काम इंडिपेंडेंट लोग ज्यादा थे। एंड सेकेंड, लोगों की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा थी, राइट? सो दीज आर द टू रीजंस व्हाई देयर वाज ग्रोथ इन यूएस। पहली चीज इस पे हमारे ऑथर ने फोकस की है, राइट? बेटा सेकेंड थिंग जो ऑथर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बिजनेस साइकिल। बेटा एवरीबडी विल रीड दीज पेजेस टुडे इटसेल्फ। आज ही बुक उठा के इन पेजेस को साथ में ही आप पढ़ोगे ताकि ये बाद के लिए बैकलॉग ना बन जाए, राइट? यू मस्ट फिनिश दिस टुडे इटसेल्फ। ओके बेटा, नेक्स्ट चीज आती है हमारी बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस साइकिल के बारे में हम एक बारी बात करते हैं। तो बिजनेस साइकिल पॉइंट ये बोलता है बेटा, व्हाट इज बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल इज बेसिकली द मूवमेंट्स इन द इकोनॉमी। मतलब लेट मी जस्ट show that to you. So we can say that any economy goes through this. देखो, कोई भी इकोनॉमी पहले अपने बूम पे होती है, मतलब बहुत अच्छा हाई आउटपुट, बहुत ज्यादा आउटपुट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही कम है, लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सबके पास नौकरी है, हाई एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी बहुत अच्छा है, हाई जीडीपी। आफ्टर बूम एक इकोनॉमी गिरना शुरू हो जाती है। दिस पार्ट व्हेन द इकोनॉमी इज फॉलिंग ना बेटा, दिस पार्ट is the period when you have we can say fall in the output, fall in employment out,
increase in unemployment, fall in GDP. Right बेटा? बच्चे, in this period when everything is falling, जब सब गिर रहा होता है ना, that period is called the period of recession. फिर there is a time when the economy is at its lowest. Economy सबसे low point पे होती है. This point is called as the period of depression. This is the lowest point. सबसे कम आउटपुट है इकोनॉमी में. इकोनॉमी हैज वेरी लेस आउटपुट. इकोनॉमी हैज वेरी लेस पीपल एम्प्लॉयड. बहुत ही कम आउटपुट, कम एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में चल रहा होता है. देन बेटा व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग? देयर इज इंक्रीज इन द आउटपुट अगेन. हाँ बेटा, दिस इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ एक्सपेंशन. अब वापस आउटपुट धीरे धीरे बढ़ रहा है, इकोनॉमी रिकवरी कर रही है, ऑल्सो कॉल्ड एज रिकवरी. राइट? तो ऑथर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किसी भी इकोनॉमी में ये बिजनेस साइकिल जो कॉन्ट्रैक्शंस एक्सपेंशंस होते हैं क्यों होते हैं. ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आंसर देगी आपको इस चीज का. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स आस्क्स द वेरी क्वेश्चन कि व्हाई बिजनेस साइकिल्स हैपन इन द इकोनॉमी. ये बिजनेस साइकिल्स एक इकोनॉमी में क्यों होते हैं? बहुत रीजन हो सकते हैं. जब आउटपुट गिरा हुआ है, व्हेन आउटपुट इज लो, वर्ल्ड वॉर के पीरियड में आउटपुट वाज लो, इट कैन बी अ वॉर सिचुएशन, इट कैन बी अ सिचुएशन ऑफ थिंग्स लाइक कोविड-19. उस टाइम पे भी आउटपुट बहुत लो था. हम बोल रहे थे कि इकोनॉमी तो डिप्रेशन में चली गई है. सो देयर कैन मल्टीपल रीजंस, बट उन रीजंस को इवैल्यूएट करना वही काम है एक मैक्रो इकोनॉमिस्ट का. राइट? सो वी कैन गो अहेड एंड वी कैन से, प्लीज राइट दिस डाउन बेटा विद मी, that business cycle describes short run fluctuations in the economy. इकोनॉमी में जो भी शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन हो रही हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन हो, एक्सपेंशन हो, उसको बिजनेस साइकिल एक्सप्लेन करता है. लाइक contractions and expansions. ये हो गई बिजनेस साइकिल. ठीक है? अब क्या बताना है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्या काम है? सो मैक्रो इकोनॉमिक्स is concerned with identifying reason behind business cycle. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पूछ रहे कि ये बिजनेस साइकिल हो क्यों रही हैं, क्यों हम इकोनॉमी में इस पॉइंट पे हैं या इस पॉइंट पे हैं या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, क्यों हैं हम यहाँ पर. दैट इज व्हाट दिस इज आंसरिंग. क्लियर है बेटा? कि बच्चे, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, अनएम्प्लॉयमेंट. बेटा अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? दोज पीपल हु वांट टू वर्क. मैं काम तो करना चाहती हूँ बट मुझे नौकरी ही नहीं मिल रही. सो दे आर लुकिंग फॉर वर्क, दे वांट टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क. दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. राइट? तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई बच्चे? दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, उनको मन है कि वो काम करें, दे आर विलिंग टू वर्क एंड आर एक्टिवली सीकिंग वर्क, मतलब ढूंढ रहे हैं काम. बट आर नॉट फाइंडिंग जॉब, बट उनको काम नहीं मिल रहा. आर अनएम्प्लॉयड. राइट बेटा? अच्छा एग्जाम्पल देखो. देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद से बोल रही हूं कि मेरे को नहीं काम करना, आई वॉन्ट टू बी, आई वॉन्ट टू सिट एट होम, मेरे पेरेंट्स बहुत रिच है, मेरे को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, आई एम नॉट लुकिंग फॉर वर्क, तो मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूं. बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग फॉर वर्क ओनली, मैं तो काम ढूंढ ही नहीं रही हूँ. दोज पीपल हु लुकिंग फॉर वर्क, वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं ना, वो, और उनको काम नहीं मिल रहा, वो अनएम्प्लॉयड है.
जो काम ढूंढ ही नहीं रहे वो अनएम्प्लॉयड नहीं है. सो वी कैन से दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लेबर फोर्स बच्चे. राइट बेटा. बेटा व्हाट इज लेबर फोर्स? लेबर फोर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड. या तो लोगों के पास नौकरी है, ईदर दे हैव जॉब, या लोगों के पास नौकरी नहीं है, दे डोंट हैव जॉब, पर वो ढूंढ रहे हैं. दोनों को मिलाकर हमारे पास आता है लेबर फोर्स. और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाता है नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स. जो लोग भी काम ढूंढ रहे हैं पर उनके पास नहीं है, डिवाइड बाय टोटल लोग जो काम ढूंढ रहे हैं या काम कर रहे हैं, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या काम है? मैक्रो इकोनॉमिक्स ये क्वेश्चन पूछती है कि व्हेन एंड व्हाई इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई. अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस साल ज्यादा क्यों है या इस साल कम क्यों है? कौन से फैक्टर्स हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करते हैं? दैट डिटरमाइन अनएम्प्लॉयमेंट. तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डिटरमाइन करते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी इकोनॉमी में ज्यादा क्यों होती है, अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी इकोनॉमी में कम क्यों होती है? ये क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स आंसर. दिस इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स विल आंसर. ओके बच्चे. नेक्स्ट, इन्फ्लेशन. बेटा व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो इंक्रीज इन प्राइस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन. बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछता है कि इन्फ्लेशन हो क्यों रही है, क्या रीजन है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में हाई है, और जब हाई होगी तो उससे क्या होगा, हाउ विल इट इम्पैक्ट द इकोनॉमी. These are the questions that macroeconomics will answer. So macroeconomics क्या ढूंढ रहा है, किस चीज का आंसर ढूंढ रहा है? Why is inflation high in particular economy? किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हाई क्यों है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स आंसर देगा. क्लियर है बच्चे? अच्छा एक बात समझो जरा बेटा, सोचो आपके पेरेंट्स आपको 3000 पर मंथ पॉकेट मनी देते हैं. पहले आप मेट्रो से आते थे और मेट्रो की आपकी जगह से दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने की टिकट सपोज 40 रुपीज थी. अब उसी मेट्रो से जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आते हो तो सपोज ये 60 रुपीज की टिकट होगी. व्हाट विल हैपन व्हेन द प्राइस ऑफ द टिकट इंक्रीजेस? आप नंबर ऑफ विजिट्स कम कर पाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्योंकि इट इज एक्सपेंसिव. सो व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, जब भी किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है. व्हाट यू कैन परचेज विल डिक्रीज, सो द नंबर ऑफ योर विजिट्स विल डिक्रीज. हाँ, तो हाई इन्फ्लेशन is associated with low purchasing power. Clear बच्चे? Okay. Now बेटा next question बेटा, international economy. ओके बेटा, ट्राई टू सी. देखो जब भी हम किसी भी इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो मैंने आपको बताया दो तरीके की इकोनॉमी होती है, ओपन और क्लोज्ड. क्लोज्ड मतलब वो इकोनॉमी जो बाहर के लोगों के साथ ट्रेड नहीं कर रही है, और ओपन वो इकोनॉमी जो बाहर के साथ ट्रेड कर रही है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या पूछता है कि जब हम क्लोज्ड से ओपन इकोनॉमी में ट्रांजिशन करते हैं, व्हेन वी गो फ्रॉम क्लोज्ड टू ओपन इकोनॉमी, हाउ विल द नेशंस इकोनॉमी बी इम्पैक्टेड. नेशन की इकोनॉमी कैसे चेंज होगी
जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी बनेंगे। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे इसमें देयर आर टू वर्ड्स, एक बोलते हैं एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है? जब आप बाकी देशों को अपना सामान बेचो, व्हेन यू सेल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया से बाहर पैसा, बाहर चीजें जा रही हैं, जैसे कॉटन गया, कॉटन बेचा, वीट बेची, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी सर्विसेज बेची। व्हेन इंडिया इज सेलिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इन रिटर्न इंडिया के पास पैसा आ रहा है, मनी इज कमिंग इन, वो हो गया एक्सपोर्ट। बेटा व्हाट इज इंपोर्ट? व्हेन इंडिया इज परचेजिंग, इंडिया ने पेट्रोल खरीदा, इंडिया ने कुछ और खरीदा, व्हेन इंडिया इज परचेजिंग इट इज इंपोर्ट। बेटा व्हेन एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को बोल देते हैं ट्रेड सरप्लस। क्या बोल देते हैं? ट्रेड सरप्लस। सो व्हेन एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट वी हैव ट्रेड सरप्लस इन द इकोनॉमी। उसी तरीके से अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होगा तो उसको बोल देते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछती है कि ट्रेड सरप्लस होगा या डेफिसिट, और एक इकोनॉमी के किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि सरप्लस है या डेफिसिट। व्हाट विल डिटरमाइन वेदर देयर विल बी सरप्लस और डेफिसिट इन द इकोनॉमी, किस फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा, दैट इज व्हाट इट गोज अहेड एंड टेल्स। क्लियर हुआ बात को? ओके बेटा, लास्ट फैक्टर दैट वी वांट टू डू, that is basically the factor of your policies. So please write down macroeconomic policy. बच्चे मैक्रोइकोनॉमिक पॉलिसी दो तरीके की होती है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी and one is called as monetary policy. Fiscal, monetary. बेटा फिस्कल पॉलिसी होता है गवर्नमेंट के खर्चों से रिलेटेड, टैक्सेस से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड, सब्सिडी से रिलेटेड। फिस्कल पॉलिसी मींस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, मतलब जब भी गवर्नमेंट ने खर्चा किया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या गवर्नमेंट ने किसी को सब्सिडी दी कि ठीक है ये चीज सस्ते में ले लो, सब्सिडीज, या गवर्नमेंट ने कहीं पे भी पैसा ट्रांसफर किया, या गवर्नमेंट ने टैक्सेस कलेक्ट किए, टैक्सेस, दैट इज ऑल फिस्कल पॉलिसी। बेटा मॉनेटरी पॉलिसी इज अंडर द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, आरबीआई के अंडर आता है। हाँ, और ये क्या है? ये एज द वर्ड सजेस्ट ये बताता है कि एक इकोनॉमी की मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए, हम किस रेट से इकोनॉमी को मनी सप्लाई करें, तो वो हो गई मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके से यूज की जा सकती है। मतलब अगर रिसेशन होगा सो वी विल बी यूजिंग देम वेरी डिफरेंटली, अगर डिप्रेशन का पीरियड हुआ तो हम इनको बहुत अलग तरीके से यूज करेंगे, अगर बूम का पीरियड हुआ तो हम इनको बहुत अलग तरीके से यूज करेंगे। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इस क्वेश्चन को आंसर करता है कि गवर्नमेंट को इन फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज को कैसे यूज करना है, हाउ विल वी यूज दीज फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज एंड हाउ विल इट इम्पैक्ट द नेशन, इससे मेरे नेशन को कैसे फर्क पड़ेगा, दैट इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बताता है। एम आई क्लियर विद इट बेटा? ओके, नाउ बेटा बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करती है जिससे हम बोल देते हैं ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम।
बेटा देखो, एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को हम बोलते हैं बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो उसके रेवेन्यू से ज्यादा हो सकता है। खर्चा मतलब क्या? गवर्नमेंट इज मेकिंग फ्लाईओवर, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, हाउ इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग? इट इज मेकिंग फ्लाईओवर, इट इज मेकिंग हॉस्पिटल, इट इज मेकिंग स्कूल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारा खर्चा है गवर्नमेंट का। हाउ इज गवर्नमेंट अर्निंग मनी? टैक्सेस कलेक्ट करके। सो इफ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन इट्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट कमा कम रही है और खर्च ज्यादा करके, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन इट्स रेवेन्यू, इट विल हैव अ डेफिसिट। दिस इज द फर्स्ट। बच्चे व्हाट्स द सेकंड? सेकंड इज कॉल्ड एज ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट मैंने आपको बताया ना, इफ एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, तो दैट इज ट्रेड डेफिसिट। These two problems together are called as twin deficit problem. और किसी भी गवर्नमेंट का क्या एम है? The aim of any government is to resolve both. हमें बजट डेफिसिट को भी कम करना है और हमें ट्रेड डेफिसिट को भी कम करना है। वी वांट टू रिड्यूस बजट डेफिसिट आल्सो एंड ट्रेड डेफिसिट आल्सो। क्लियर है बात? These are the two problems of the government. ये दोनों ही गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। तो मैक्रोइकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडीज हाउ टू सॉल्व दीज टू प्रॉब्लम्स। मैक्रोइकोनॉमिक्स इस बारे में है कि हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एग्रीगेशन, बेटा एग्रीगेशन वर्ड कम्स फ्रॉम एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब है कंबाइंड। तो एग्रीगेशन का क्या मतलब हो गया? व्हेन वी कंबाइन इंडिविजुअल वेरिएबल्स टुगेदर, जब हमने सारी प्रॉब्लम्स को कंबाइन किया तो हमें एग्रीगेशन मिला। और एग्रीगेशन होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है इंडिविजुअल से। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स बता देगा कि अच्छा फर्म्स अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, अच्छा कंज्यूमर्स अपना यूटिलिटी कैसे बढ़ाएं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डीलिंग विद इंडिविजुअल प्रॉब्लम, इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एक्सेट्रा। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डीलिंग एज अ होल, पूरे नेशन के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स डील कर रहा है। सो इट इज डीलिंग विद एन एग्रीगेट प्रॉब्लम, कंबाइंड प्रॉब्लम के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डीलिंग। बेटा आई विल जस्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेशन एंड देन वी एंड। सो प्लीज राइट डाउन द प्रोसेस of summing individual economic variables to obtain economy-wise total is called aggregation. नेशनल इनकम की दी थी। ही वॉज वन ऑफ द अर्ली पर पीपल, जो ट्रेडिशनल लोग थे ना, जैसे मार्शल, पिगो, फिशर, दीज वर द ट्रेडिशनल पीपल। ये एकदम ही बेसिक डेफिनेशन इन लोगों ने हमें नेशनल इनकम की सजेस्ट की थी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस बेसिक डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्या होती है ये, इसका क्या मार्शल ने बोला, एक बारी हम ये लिख लेते हैं। लेट्स राइट दैट डाउन। सो प्लीज राइट डाउन द लेबर एंड कैपिटल of a country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial
इंक्लूडिंग सर्विसेज ऑफ ऑल काइंड। तो जो एक इकोनॉमी का लेबर और कैपिटल होता है, वॉट एवर इज द लेबर एंड कैपिटल ऑफ द इकोनॉमी, वो जो भी एग्रीगेट प्रोड्यूस करता है कमोडिटीज का, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो एप्पल प्रोड्यूस कर रहा हो या बनानास प्रोड्यूस कर रहा हो, और नेट, यहाँ पे वर्ड नेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ये नेट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज आफ्टर डिडक्टिंग all the things like depreciation, like wearing out of capital, ये सब डिडक्ट करने के बाद जो नेट एग्रीगेट बचता है, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन हमें दी थी मार्शल ने। उसके बाद अनदर डेफिनेशन विच इज इंपॉर्टेंट इज पिगो की डेफिनेशन। सो पिगो सेड दैट नेशनल इनकम इज दैट पार्ट of the objective income of the commodity, of the community, including income derived from abroad, which can be measured in money। तो जितनी भी इनकम बेशक ही अब्रॉड से आ रही हो या हमारी अपनी कमोडिटी से आ रही हो, इफ आई कैन मेजर दैट इनकम इन टर्म्स ऑफ मनी, देन इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय पिगो। ऐसे ही फिशर ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी थी, एंड अकॉर्डिंग टू फिशर नेशनल इनकम वाज नथिंग बट इट वाज कंजम्पशन। तो अगर नेशनल इनकम में हम कंजम्पशन क्राइटेरिया इंक्लूड कर दें तो फिशर की नेशनल इनकम थी। तो अगर आप कोई भी डेफिनेशन लिखते हो जिसमें वो बोलता है दैट नेशनल इनकम अल्टीमेटली इज द इनकम कंज्यूम्ड और रिसीव्ड बाय कंज्यूमर्स, द अल्टीमेट इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, तो वो डेफिनेशन हमारी फिशर की नेशनल इनकम की डेफिनेशन हो जाती है। तो बेसिकली ये तीन इंडिविजुअल्स की डेफिनेशन, मार्शल, पिगो एंड फिशर, इनकी डेफिनेशन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल। So when we talk about the concept of national income, the first important thing that we have is gross national product. Gross national product और GNP जो basically होता है, इसमें actually gross national से भी पहले we can talk about gross domestic product. Gross domestic product जो होता है वो हमेशा within the region होता है, within the boundaries of the country. Whether it is produced by residents or non-residents, but it is always within the boundaries of the country. Only that is why it is called the GDP of the country. इस GDP से हम GNP की तरफ जा सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। जब भी हम नेशनल की तरफ जाते हैं डोमेस्टिक से, सो व्हाट वी डू फ्रॉम डोमेस्टिक टुवर्ड्स नेशनल, what becomes important is net factor income from abroad. National income basically वो income होती है which consists the income of the residents, चाहे वो resident within the boundaries हो या outside country boundary. But if I am only taking the income of the resident, then it is called national income. And if I'm taking the income of resident or non-resident but within boundary, then it is domestic. तो ध्यान से समझो, यहां पे मेरे पास डोमेस्टिक इनकम है। डोमेस्टिक इनकम में मेरे पास दो चीजें हो गई, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, बट बाउंड्री के अंदर अंदर। यहां पर मेरे पास नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम में आ गए रेजिडेंट, सिर्फ रेजिडेंट, चाहे वो बाउंड्री के अंदर हो या अब्रॉड में बैठे हो, बट रेजिडेंट होने चाहिए। अब अगर मुझे यहां से यहां जाना है, आई शुड सब्ट्रैक्ट नॉन रेजिडेंट का इनकम एंड आई शुड ऐड रेजिडेंट अब्रॉड का इनकम।
So if in domestic income, I subtract the income of non-residents within country, ये subtract कर दो, and I add the income of residents outside India, तो I will get the national income. यही तो करना है. So domestic income, कोई भी doubt हो, please write it in the chat section below. So domestic income plus net factor income from abroad gives me national income. This is my definition. I hope this is making sense. ये definition को अच्छे से समझ लो. Okay, इस definition के बाद आगे बढ़ते हैं. So now what I'm going to go ahead and do is, we are going to talk about net versus gross. तो gross minus depreciation, ये हो जाता है net. Gross minus depreciation, ये हो गया हमारे पास net. ठीक है जी. नेक्स्ट आता है फैक्टर वर्सेस मार्केट प्राइस. बड़ा ही आसान है समझना. देखो, जब भी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में होता है, तो वो जो प्रोडक्ट है जो मार्केट में आता है, वो प्रोडक्ट में हमेशा टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं. जैसे मैकडॉनल्ड्स, जब आप मैकडॉनल्ड्स में भी जाते हो, तो आप जो उसमें प्राइस पे करते हो, वो जैसे अगर 25 रुपीज का बर्गर है, तो आप 28 रुपीज पे करोगे, है ना. आप उसमें विद टैक्सेस पे करोगे. सो मार्केट प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस, और अगर कोई सब्सिडी मिली होगी तो सस्ता हो जाएगा प्रोडक्ट माइनस सब्सिडी. सो इट इज फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट गिव्स यू द मार्केट प्राइस. ये तीन डेफिनेशन हमें याद रखनी जरूरी है. तो अब हम यहां से किसी भी चीज पे पहुंच सकते हैं. जैसे जीडीपी एमपी से अगर मुझे एनएनपी एफसी पे जाना है सपोज, तो क्या करना पड़ेगा? इस जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए नेट में जाना है. तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट हो गया. इस डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल हो गया. इस मार्केट प्राइस को फैक्टर में कन्वर्ट करना है, उल्टा करना है, मार्केट से फैक्टर पे जाना है, तो माइनस एनआईटी. अगर मैंने इतना कर दिया, देन आई विल गेट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट. आई विल गेट एनएनपीएफसी. तो एक आपके लिए, जस्ट वेट, जस्ट गो अहेड एंड आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो द क्वेश्चन फॉर यू इज, यू आर गिवन एनडीपी एफसी and you have to convert it to GNPMP. कैसे करोगे? पॉज लो और ये मेरे को एक बारी करके दिखाओ. ठीक है बेटा, वेलकम टू अ न्यू सीरीज. इस सीरीज में हम रोज एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे हम सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स के हिसाब से अपनी पूरी फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करेंगे. सबसे पहले जो आज का हम फॉर्मूला लेने वाले हैं वो है प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड. इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं. और वैल्यू एडेड मेथड का जो फॉर्मूला रहता है उसमें हम बेसिकली ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालते हैं, जिसमें हम वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं. बेसिकली हम इंटरमीडिएट गुड्स की कंजम्पशन को डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स्ट्रा वैल्यू जो ऐड हो रही है उसी को ही इंक्लूड करना होता है. इन अदर वर्ड्स, हम क्या इंश्योर करते हैं यहाँ पर? हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारी डबल काउंटिंग ना हो और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू ही ऐड. हम देखेंगे कि हम प्रोडक्ट मेथड में नेशनल इनकम कैसे निकाल सकते हैं. तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट मेथड से. अब एक बार हमारा जीडीपी एमपी निकल गया, तो नेशनल इनकम के लिए हमें एनएनपी एफसी निकालना होता है.
एनएनपीएफसी निकालने के लिए हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड करते हैं और हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम ये 3 स्टेप्स करते हैं तो जो हमें फाइनल आंसर मिलता है वो एनएनपीएफसी मिल जाता है। और इसी तरह हम प्रोडक्ट मेथड से एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम निकालते हैं। आज हम देखेंगे कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकल सकता है। इनकम मेथड से सबसे पहले हम एनडीपीएफसी निकालते हैं। एनडीपीएफसी में सबसे पहले आ जाता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसी में हम ऐड करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। इसी में हम ऐड कर देते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। और ये सब ऐड करने के बाद हमें इनकम मेथड से एनडीपीएफसी मिल जाता है। अगर हमें इससे एनएनपीएफसी पे आना है, माने नेशनल इनकम निकालना है, तो एनडीपीएफसी में हम एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड करते हैं और हमें एनएनपीएफसी का आंसर मिल जाता है। ओके बेटा, थैंक यू। एक्सपेंडिचर मेथड का क्या फॉर्मूला होता है और उसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं तो इसमें हम लोगों के खर्चे देखते हैं। अब वो लोग कुछ भी हो सकते हैं, हाउस होल्ड हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, फर्म्स हो सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड डायरेक्टली हमें जीडीपी एमपी देता है और इसमें आ जाता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। कंजम्पशन, जो भी लोग खर्चा करते हैं ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे। इन्वेस्टमेंट, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या फर्म्स कर रहे हो। गवर्नमेंट का खर्चा, जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है। और नेट एक्सपोर्ट, जहां पे नेट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस। आज हम कुछ बेसिक फॉर्मूलाज का क्विक रिवीजन करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट को डिनोमिनेट करते हैं। डेप्रिसिएशन ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू का डिफरेंस होती है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नेशनल वैल्यू माइनस डोमेस्टिक वैल्यू होती है। जीडीपीएफसी जीडीपीएमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एनडीपीएमपी जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है। और एक और चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डेप्रिसिएशन को हम एक और तरीके से बता सकते हैं। दैट मीन्स द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द कैपिटल। वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल जो भी हो रहा है, कभी कभी उसको भी डेप्रिसिएशन बोल दिया जाता है। हम देखेंगे कि हम प्रोडक्ट मेथड में नेशनल इनकम कैसे निकाल सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट मेथड से। अब एक बार हमारा जीडीपी एमपी निकल गया तो नेशनल इनकम के लिए हमें एनएनपीएफसी निकालना होता है। एनएनपीएफसी निकालने के लिए हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड करते हैं और हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम ये 3 स्टेप्स करते हैं तो जो हमें फाइनल आंसर मिलता है वो एनएनपीएफसी मिल जाता है। और इसी तरह हम प्रोडक्ट मेथड से एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम निकालते हैं। आज हम बात करेंगे पर्सनल इनकम की। पर्सनल इनकम टोटल इनकम है जो भी लोगों को मिलती है, इंडिविजुअल्स को मिलती है अलग अलग सोर्सेज से। चाहे ही वो पैसा वो वेजेस के थ्रू कमा सकते हैं या अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं या और किसी भी सोर्स के थ्रू जो भी उनको पैसा मिलता है वो पर्सनल इनकम है। पिछली क्लास में हम प्राइवेट इनकम पहले ही पढ़ चुके थे। प्राइवेट इनकम से ही पर्सनल इनकम निकलती है। प्राइवेट इनकम में हम पहले ही गवर्नमेंट की इनकम को हटा चुके थे और हमने सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की इनकम को लिया था।
अब इसी प्राइवेट इनकम में से अगर हम टैक्स को हटा दें, कॉर्पोरेट टैक्स को, और अगर हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को भी हटा दें, तो जो हमें आंसर मिलता है उसी को हम पर्सनल इनकम बोल देते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से प्राइवेट इनकम की तरफ बढ़ेंगे, ताकि अगर हमें न्यूमेरिकल में प्राइवेट इनकम निकालने को आए तो हमें पता रहे कि कैसे निकाल सकते हैं। सपोज आपको एग्जाम में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दिया हुआ है, तो इस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में आप डायरेक्ट पर्सनल टैक्स को ऐड करोगे, और जो भी हमारा मिसलेनियस फीस या फाइन हाउस होल्ड ने दिया होगा, फीस या फाइन दिया होगा, उसे भी ऐड करोगे, और ये करने के बाद आपको पर्सनल इनकम मिल जाएगा। एक बार ये पर्सनल इनकम मिल जाए तो इसमें आप कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स ऐड कर दोगे और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ऐड कर दोगे, और जो आपको आंसर मिलेगा वो ही आपका प्राइवेट इनकम होगा। आज हम प्राइवेट इनकम से डोमेस्टिक फैक्टर इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे। पिछली क्लास में हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से प्राइवेट इनकम की तरफ गए थे। अब हम इसी में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हटा दें, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट को भी हटा दें, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट भी हटाएं, और करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हटा दें, तो हमें जो यहां पर आंसर मिलेगा वो हो जाएगा डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। कभी कभी एग्जाम में ये निकालना आ जाता है। पिछली 2 क्लासेस में हमने ये कोशिश की है कि हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से डोमेस्टिक फैक्टर इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़े। आज हम यहां से नेशनल इनकम तक का जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो अगर यहां पर हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर और सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइज ऐड कर देते हैं, तो हमें एनडीपीएफसी मिलता है। इस एनडीपीएफसी में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर देते हैं, तो हमें एनएनपीएफसी मिल जाता है, और इसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अब इसी का उल्टा चार्ट आप खुद से प्रिपेयर करो। नेशनल इनकम से पर्सनल डिस्पोजेबल। About labor market, the first thing that arises is you have to understand that not everyone in the population is a working population. You have the entire population, and you can divide the population in 2 parts: people who are working and people who are not working. People who are not working is called the dependent class. Don't worry, we will write everything down. पहले समझ लो. People who are not working is the dependent class. Just for example, people from age 0 to 18 can be dependent on their parents. So that's the dependent class. People from 60 till the end, they have retired and maybe they are dependent on their children. That's also the dependent class. So I must divide my entire population into people who can work and people who cannot work. Okay, so what will I say? But I will say that if I have the total population, isko you can give the title as flow of workers. So if I have my total population, this population can be divided in 2 parts. One is dependent and one is non-dependent. In dependent, I will include all people till the age of 18 or 16, depending on which country you are from.
कुछ कंट्रीज में 18 तक वर्क करना अलाउड नहीं है, कुछ में 16 तक, एंड देन एनीबडी अबव द एज ऑफ 16. नाउ द पीपल हु आर नॉट डिपेंडेंट, मतलब वो काम कर सकते हैं, दे आर बिटवीन द एज ऑफ 19 to 18 plus to below 60. But these people, they can further be divided in two parts: institutional and the other can be non-institutional. Civilians. बेटा इंस्टीट्यूशनल वो हो गए जो मिलिट्री में है, उनको हम वर्किंग में नहीं काउंट करेंगे, वो हमारी जनरल वर्किंग में नहीं आएंगे, राइट? सो अदर देन दीज, जो भी नॉन इंस्टीट्यूशनल है, जो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड नहीं है कंट्री के, that is the general civilian population that I have. Now, out of these civilians, I can divide it in two parts. There may be people who want to work and there may be people who don't want to work. Just for example, there may be people who are housewives. Housewives, they are non-institutional civilians. वो किसी इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड नहीं है, but they are just going ahead and they're working within their home, right? Similarly, there may be people who say, supposedly, I want to take a break for 1 year from my regular work. Then I am also a non-institutional civilian, but I'm not working. So I can divide this again in two parts. One becomes your civilian labor force, and other becomes out of labor force. तो बेटा ये लेबर फोर्स कौन सी हो गई? ये लेबर फोर्स वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं. People who are willing to work. They may get job or they may not get job, but they should be willing to work. Then they are part of the labor force. So we can say now we should define the labor force first. So please define it, beta. Labor force. The civilians who are willing to work. Form labor force. So they may or may not get a job. वो बात की बात है. But they are looking out for a job, na? They want to work, na? They don't want to stay at home. Then they are part of this labor force. So then labor force can be divided in two parts. One becomes employed and one becomes unemployed. Who are employed? Employed are the people who have job, who are currently working, and who are unemployed, people who are not working, but they want to work. They are looking out for job. So I want to define unemployed as those people who are willing to work. They want to work, but do not currently have a job. So those people who are willing to work, काम तो करना चाहते हैं, but job नहीं है, that is an unemployed person. Now, beta, when you will get this in exam, you have to make this flow. If you don't make this flow, then things will be difficult for the faculty to understand. Okay, so this diagram, which is the flow of workers, this is very, very important. Now, there is another diagram that we need to understand, and I can call that diagram as the relationship between employed
unemployed and labor force. And I want to do this with some numbers. तो ध्यान से समझो अब हम क्या कर रहे हैं. Say, I make a circle and this represents employment. And I'm saying that there are 127 million people who are employed. वो लोग जो अभी employed है currently, वो 127 million लोग हैं एक country के अंदर. And बेटा, I am saying that unemployed. There are 7.0 million people who are unemployed. And then I have out of labor force. There are 66.7 people who are out of labor force. अब पहली बात समझो. Suppose I ask you, find the labor force. So beta, what is the labor force? Those people who are either employed or unemployed. या तो वो employed है या unemployed है, but they are part of the labor force. They are willing to work. Then that is labor force. So beta, my labor force will be employed. L will be employed plus unemployed. Employed will be 7. Unemployed will be 7. And employed will be 127. So I will get this as 134 million. That is going to be my labor force. Now, suppose I ask you question number 2, find the total population. So बेटा यहाँ पे कुछ civilians, non-civilians, dependent, non-dependent कोई information नहीं दी है. So I can simply say in this case that total population will be people in the labor force plus out of labor force. Either वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, either they are willing to work or not willing to work. And this means that these people who are out of labor force, it already includes younger children and old retired people. Because no third information is given. यहाँ और कुछ भी नहीं दिया हुआ. मतलब out of labor force में वो लोग भी होंगे जिनकी job खत्म हो चुकी है. People who have retired, automatically they are not looking for job. So they are out of labor force. And children, like for example, people who are studying currently, right? They are also not looking for job. They are also out of labor force. So it means that this out of labor force would have included people who are basically dependents. That is why this is the thing, right? So this may also happen. So I can just say that beta labor force was 134. This is what I calculated. And my out of labor force is going to be 66.7. So this is going to be, calculate this 9 and 10, 200.7. This is going to be my total population. Third thing. So beta, these kind of numericals can come in exam as a 5 marker. So you should be aware of these. Now just think about it. Beta, I am saying that labor force is employed plus unemployed. Suppose I divide throughout by L. I'm dividing throughout by labor force. So क्या हो जाएगा? L by L is equal to E by L plus UE by L. Beta, L by L तो simply 1 हो गया. This thing, number of people employed by the labor force, beta, this is known as employment rate.
employment rate. And number of people unemployed by labor force, this is called as unemployment rate. Unemployment rate. So what are we saying? We are saying that employment rate plus unemployment rate, that is equal to 1. Now, suppose I ask you, calculate employment rate. So beta, what will you do? Employment rate is going to be how many people are employed? 137. What is the labor force? Population se divide nahi karna hai. Many people make this mistake. How many people are unemployed? Employed? 127. What is the labor force? 134. So beta, this is going to be, employment rate will be 127 by 134. Please calculate this for me in decimals. Okay. Similarly, if I ask you calculate unemployment rate, again beta, unemployment rate will be people unemployed by labor force. Nobody will divide it by population. No mistake should be done here. So people unemployed are 7 and total labor force is 134. So this is going to be 7 divided by 134. This will be your unemployment rate. So I hope this is clear how we can find the employment rate and how we can find the unemployment rate. Now, let us make few notes here. Important notes. First point, पहले समझो फिर लिखेंगे. देखो बेटा, जो हमारा आउट ऑफ लेबर फोर्स है, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, people who are not working, I have told you that because there is no other value, matlab it includes dependents also. Now imagine a person, suppose a person like you. Suppose you are currently in your 3rd year of college. Now next year you look out for a job and you get a job, or you don't get a job, but you start looking out for a job. The moment you start looking for a job, it means you have become a part of the labor force, right? So people who are out of labor force, every year from those people, few will become part of the labor force because they will start looking out for job. When will they look out for job? Who can look out for job? Number 1, students who turn 18 plus, or in other words, who now become non-dependent students, right? Or graduates, once they have graduated or post-graduated, can start looking out for job. Thus becoming part of the labor force. So earlier they were out of labor force, but now they have become part of the labor force. They may or may not be employed. Ekdam se zaruri nahi hai they will get a job. So they may or may not get a job. But they're looking out for job now. So they are becoming part of the labor force. Is this clear? That's the first part. Second, suppose imagine that there was this mother who was working earlier, but she just left her job to take care of her child. Now her child is big enough. Okay. Now, because the child is big enough and the child is now capable of doing work, the mother wants to get back and start looking out for job. So she will also be part of the workforce. So in other words, any person who immediately starts looking out for job
This is other example. So housewives who now want to look out for job. Again, they may, this is V beta, they may or may not get a job, but they're looking out for job now. So therefore, they're becoming part of the labor force. So first thing that we have to understand is that from this out of labor force, अब हम आगे concept को बढ़ा रहे हैं, that some people will become part of the labor force. दोनों डायरेक्शन में, आधे लोग एम्प्लॉय हो जाएंगे और आधे अनएम्प्लॉय हो जाएंगे. Some will get a job, some will not get a job, but they are becoming part of the labor force, right? Like housewives or any person. For example, any person who left a job because he thought that I want to take a break. Now he wants to again look for a job. So any person who's looking out for a job is becoming part of the labor force. He may or may not get a job. If he gets a job, he becomes employed. If he doesn't get a job, he becomes unemployed. But nevertheless, he's looking out for a job. So ऐसा हो सकता है, supposedly some numbers are given that let's say that 1.5 million people, they get a job. And let's say that 1.1 million people, they don't get a job. But they are looking out for job now. So they have become part of the labor force. ये पहली बात हो गई. Second beta. Second pointer. Note 2. Imagine that I am looking out for a job since last 4 years. I was part of the labor force. Now, all of a sudden, I think I don't want to look anymore. बहुत हो गया यार, 4 साल से ढूंढ रहे हैं, नौकरी तो मिल नहीं रही है. I get very distressed and I stop looking out for a job. So people who stop looking for job, they become out of labor force. There are people who don't have incentive to look for a job. कि यार अब नहीं हो पा रहा और नहीं ढूंढ पा रहे हैं. So there may be people who no more want to look out for a job because they no more have an incentive attached to it. So अभी तक तो मैं job ढूंढ रही थी, but now I think it's too much. I don't want to anymore look out for a job. So because I've stopped looking for a job, अब मैं job ढूंढ भी नहीं रही हूँ. I don't want to work. I will go out of labor force. अब मेरे को कोई unemployed नहीं बोलेगा. अब मेरे को labor force के ही बाहर माना जाएगा. So every year, some people become distressed. And they stop looking out for a job altogether. So they become out of labor force. Okay, beta. Now, every year, note 3. बेटा आपने बहुत देखा होगा लिंक्डइन पे 2 चीजें हो रही होती हैं. One is called hire and the other that many people have hashtag open to work, that I have got, they have just asked me to leave the job. There are separations from the job. Separations. So these two things happen quite often. Hire means what? Hire means that unemployed become employed. एंड दूसरा क्या हो सकता है, जो लोग एम्प्लॉयड हैं अब वो अनएम्प्लॉयड हो गए, उनको जॉब से निकाल दिया गया. सो एम्प्लॉयड
become unemployed. These two things are also possible. So what will happen, beta? That means that there will be some people who were employed, but they have lost their job, and they have become unemployed. उनको फिर से ढूंढनी पड़ेगी नई नौकरी. They have to again look out for a job. And there are some people who were unemployed, but now they have been hired. And they have got a job. ठीक है जी. So this can also take place. At last, next note. Let's write that down. Note 4. Beta, imagine that you were employed. अच्छी खासी नौकरी थी. But now, all of a sudden, you think, I don't want to work anymore. Let me just retire. Or you may think that I want to dedicate some time to my house. I want to take care of my family and I will rejoin sometime later. So there may be people who retire, who were working, but now they have retired. Or people who willingly quit job to rest for a while. Or maybe again, I gave you an example. Maybe, I am a new mother. I want to leave for some time and I want to take care of my family. So other reasons, like taking care of family. Due to these are those people who were better employed, but now they are not even looking for a job. Unemployed nahi ho rahe hain. They're going out of labor force. So this direction is also possible, that from employed, you will simply go out of labor force. That is also possible. Now, one last thing here. So write down the last note, note 5. Now, but suppose I'm employed in XYZ company. It might be possible that now I switch my job, right? Or I am employed as, let's say, a professor. It might be possible that now again I switch my job and I go into some other kind of job. So it is possible that people who are employed switch job, but remain employed. So this is shown by something like this. They were employed, they remain employed, but they keep switching their jobs. So you have to consider all of this. This is now the complete relationship that we have drawn. This relationship takes into consideration all these things that I have written. There can be separations, there can be hires, there can be quits, there can be layoffs. Layoff matlab ki people who were employed, but now they have become unemployed. This is a layoff. Right? So considering all of these things, this is the entire diagram that you can draw as a relationship between these things. And these relationships are very, very important, even from exam point of view. Now, I want to define something which is known as average duration of unemployment. वैसे तो ये वर्ड ही अपने आप में समझा देता है कि इसका क्या मतलब है, but let's understand. The average time that you spend being unemployed, that is known as average duration of unemployment. So we can simply say, in very simple terms, we can say that the average length of time
people spend unemployed is called average duration of unemployment. Okay, beta. Now, different countries will have different this thing. ठीक है, तो मैं अपनी इंडिया के डेटा को एनालाइज करके I can look into the data and I can tell अच्छा कितने टाइम के लिए on an average it takes a person to get a new job. Suppose today I become unemployed, how much time will it take for me to get into a new job? So different countries have different data set, and your book suggests that I think so for US it is 2 to 3 months. Okay, so again this differs from country to country. Okay, it can be different for each country. Okay, now we want to go ahead and we want to talk about something which is very, very important in this chapter, and that is the peaks and lows. But usually empirical result or empirical data does not come in exam. मतलब ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि 1990 में यूएस में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट था या 1994 में यूएस में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट था. People will not ask that. But still, because you are an economics student, you should be aware about some of the graphs and how to interpret those graphs. Okay, so I am just going to go ahead and I'm going to take you through one of that graph, and I'm going to go ahead and explain to you what it means. So let's say I take year here, and let's say I take unemployment rate here. Right? This is again a US data that I'm teaching you. Let's say that beta, the data set looks something like this. ये important नहीं है, समझो कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है. Beta, note that this is going high to high to high to high. Lows भी आ रहे हैं, but it's going from high to high to high to high. Whenever you see such graphs, from those graphs, you can find what is called as a trend. What is a trend? A trend is a line that you draw through the graph. So if I were to draw a line through this much part of the graph, I will understand that it must be an upward line. I cannot draw a downward sloping line. No, वो तो नहीं बन रही है. So if I draw a line through these points, I clearly see it should be an upward sloping line. And if I see a line through these points, I see that this should be a downward sloping line. Because this line that you draw, that is called as trend. And what does a trend tells me? A trend tells me a long run movement. So a trend is telling me, if I draw an upward slope line, it means that beta, over time, unemployment rate is increasing. More people are becoming unemployed. And if I draw a downward sloping line, it means that over time, people are getting jobs and unemployment rate is decreasing. Okay, so you can just make a note of this point. ये किसी भी ग्राफ के लिए इंपॉर्टेंट है. मतलब आपको, as I told you, कोई एक ग्राफ इसमें हमें याद करने की जरूरत नहीं है. We don't have to remember one particular graph because these are just empirical data. But you should understand how to read a graph in general. So we can say that there is a trend, and a trend represents long run situation. In this case, so if you go to the data point, बस एक यहाँ का मैं बता रही हूँ, this data point, it is 1980. So in this case, it is showing that till 1980,
unemployment rate was increasing. Post which it started to decrease. Okay, beta. Post which it started to decrease. Let us do the next part of it, beta, which is known as wage determination. Okay, and in this, the first thing I want to talk about, let's write them down together only. That is known as collective bargaining. What is collective bargaining? Wage determination means that we have to find what are the different ways in which wage can be determined. क्या क्या तरीके होते हैं कि हम wage को calculate कर सकते हैं, कि हम wage find कर सकते हैं. उसके अंदर the first technique that we want to talk about is collective bargaining. First of all, read the term. But collective means together. Bargaining का मतलब हमें पता है, I am bargaining with someone. So collective bargaining means when you bargain together. Now, you would have seen these movies in the old era. I think so, all these Anil Kapoor movies, right? क्या होता था उन movies में? So in those Anil Kapoor movies, you would see that he was the head of a labor union. And then there were multiple laborers. And then he would go ahead and he would bargain the wage on their behalf, right? He would say, ki, we will not work if you don't give us this much wage. He would set a bar that anything below this wage, I am not going to work. That is collective bargaining. When you have a labor union and one person is not asking for a different wage, all those people together, they go ahead and they ask for a particular wage. That is an example of collective bargaining. So let us write down the formal definition of it. So please write down bargaining between a union of labor or a group of unions and a firm or a group of firms is called collective bargaining. So beta, on the one side, I can have either one union or multiple unions. बहुत अलग-अलग unions एक साथ इकट्ठा हो गए हैं. On the other side, I will either have one firm or multiple firms. And the bargaining that takes place between them, that what wage we should be setting up, that is called collective bargaining. Now, this collective bargaining, it is again different from countries to countries. Same तो तरीके से follow नहीं हो सकती है. So, the book gives you multiple examples that, you know, in US, the collective bargaining takes place in one way. In Europe, the collective bargaining takes place another way. So we can go ahead and we can say that this differs from country to country. Now, I want to go ahead and I want to talk about something very important about the bargaining part here. सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे भी समझना और यूनियन के लेवल पे भी समझने की कोशिश करो. See, there are jobs which don't require a lot of skills. Just for example, let's say that the job of going ahead and distributing a newspaper, or the job of in McDonald's collecting money, right? These jobs are very different from the job of a CEO. The job of a CEO is very difficult, right?
his skills will be very difficult. He has to do many degrees. He has to take a lot of experience before he can reach that level. So I can divide the jobs in two parts. The first job can be a job which is better a high skilled job. And the second job is a take it or leave it job. मतलब अगर ऐसा कि तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है टाइप. So if it is a very high skilled job, right, which means it requires a lot of your skills to be put into place, right, then this person will have less substitutes available. इसको कोई easily replace नहीं कर सकता. Like I cannot go ahead and replace Ratan Tata, or I cannot go ahead and replace Mr. Mukesh Ambani, right? It's a very high skilled job that they are doing. So people who are into a high skilled job have more bargaining power. वो ज्यादा वेज कमांड कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि हमें इतनी पैसा दो ही दो. But people who are into a low skilled job, right, they can not have a very high bargaining power, because if they will not work, somebody else will work. So here, write down next point under this itself. So please write down that the amount of bargaining or the level of bargaining differs from job to job. बेटा मैक्रोइकोनॉमिक्स से थोड़ा लिखना जरूरी है. You should know the right words that you have to use, है ना? A lot of times you know the concept well, but if you don't have these written notes, then it will become difficult for you to write the answers in exam. So we have to write this thing also down. Okay, so please write down the higher the skills required to do the job, the more likely there will be bargaining. So if you require more skills, just a CEO ka job, then he can command any wage, right? So please write down wages offered at entry level jobs or take it or leave it jobs cannot have high bargaining attached to it. फिर से समझो. जैसे for example, even if it is a new graduate, right? Just for example, let's say I am in the industry from last 8 years. And now there is a new person who has just done economic honors and entered the industry. The amount of bargaining that I can do, jitni high wage I can command, it will be different from what that person can command. So I can say that new college graduates can negotiate only on a few aspects. वो बहुत कम negotiate कर सकते हैं. But CEOs can negotiate a lot more. So we also want to talk about कि कितनी bargaining possible है. And here अभी तक हमने दो चीजें बताई हैं, that bargaining can differ from country to country, and bargaining can also differ from person to person depending on their skill. Now, we are saying that when it comes to countries like, तो यहाँ पर मैंने कहा था ना, bargaining differs from country to country. So I will continue, just write an example here, beta. Like for example, in Japan, you can just continue below this. इसके नीचे शुरू कर दो.
that in Japan and in European countries, bargaining, collective bargaining actually, collective bargaining plays an important role. Right? And these, ये जो bargain कर रहे हैं हम, it can take place at individual firm level, it can take place at the industry level, or it can even take place at the national level. So write down, it can take place at firm, industry, or national level. Let me give you an example. तो बेटा जब हम आंसर लिखते हैं एग्जाम में, why am I emphasizing always? Because ultimately we want to score good marks, है ना? And good marks में सिर्फ ये important नहीं है कि आपको एक concept आता हो. Good marks में ये भी important है कि आपको उसको आंसर को लिखना आता हो. So जैसे अगर हमने लिखा wage determination के factors, they're asking how wage is determined. हमने उसमें first point लिखा collective bargaining. And then we wrote what is collective bargaining, हमने उसे explain किया. Then we wrote that bargaining differs from job to job. Then we wrote that bargaining differs from country to country. ये हमने लिखा. इसमें जब हमने job to job वाला point डाला, अगर उसी में if you make a diagram, marks ऐसे, so you have to understand how to write the answer. So यहाँ पर ना हमने एक diagram बना दिया that there is a job which can be high skilled and a job which is low skilled. And यहाँ आपने लिख दिया that this means you have high bargaining capacity and you have low bargaining capacity. Right? And you just highlight this. That adds to your answer. That not only the person knows, यहाँ पे again, here while you're writing, first of all, here you can write definition. Right? This is how the answer should be written. Here you will write beta factors. हमने दो फैक्टर बताए ना, skills और country. तो यहाँ पे आपने लिख दिया factors. ठीक है, अब हम लोग country के बारे में बोल रहे हैं. So as I said, this differs from country to country. Now, इधर भी एक important part है. तो मैंने यहाँ पे लिखा that you can bargain at firm level, industry level और national level. ठीक है, just take an example. Just for example, let's say that in steel industry, first समझ लो, then I will make you write that. So let's say that in the steel industry, beta, everyone starts demanding a high wage. They say कि हम इससे कम पैसे में तो काम करेंगे ही नहीं. This is the minimum wage at which I want to work. Now, when they start demanding a particular wage, कॉपर इंडस्ट्री के लोगों को लगता है कि अरे स्टील में तो इतना पैसा मिल ही रहा है. This is the wage that they are getting. Why should we get lower wage? They also start demanding higher wage. फिर तीसरा कॉटन इंडस्ट्री के वर्कर्स को लगता है that steel industry and copper industry, they are asking for a high wage. Why should I work for a low wage? They also start asking for a high wage. So a movement starts. Movement means one thing starts turning into other into third and so on. That is how bargaining starts happening at the national level. People look at each other, and when they see that acha, other people are getting so much, why are we working at a lower wage? They also start asking for higher wage, and that is how a movement starts in the nation. So what we can say? Let's finish this answer. So we can say that beta, sometimes bargaining in one sector automatically
extends to other workers working in other sectors or even the entire economy. So sometimes this movement starts in such a way that it simply extends to the entire economy. Determination में we had already gone ahead and talked about collective bargaining. उसकी हम बात कर रहे थे last lecture में कि collective bargaining क्या होती है. Today I want to go ahead and I want to start by talking about two factors which are used in wage determination. पहले समझ लो फिर लिखेंगे. सबसे पहले बेटा you have to understand something which is called as reservation wage. हर इंसान की एक वेज होती है, एक मिनिमम वेज होती है जिससे नीचे वो कभी काम नहीं करता. जैसे इफ यू आस्क मी, मैम यू वांट टू डिलीवर दिस लेक्चर, हाउ मच विल यू चार्ज पर आवर? And I tell you, beta, I will take maybe 1,000 rupees per hour. It means that I will not work below 1,000 rupees. That is my reservation wage. So beta, reservation wage क्या है? वो wage जिसके नीचे आप काम नहीं करोगे. That is reservation wage. मैं 1,000 से नीचे में काम नहीं करूंगी. That's my reservation. Then it is also defined as the wage at which you are indifferent between working and not working. माने अगर वेज 1,000 है तो उस पे मैं कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ. आई एम इंडिफरेंट बिटवीन द टू. अगर वेज 1,000 से नीचे है देन आई विल नॉट वर्क. अगर वेज 1,000 से ऊपर है आई विल डेफिनेटली वर्क. राइट? सो रिजर्वेशन वेज से ऊपर वेज होने पे एक वर्कर हमेशा काम करेगा ही करेगा. That's the first thing that we should keep in mind. We will write it, don't worry. Second, wages जो होती हैं वो लेबर मार्केट कंडीशन पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं. मतलब बेटा अगर अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में बहुत ज्यादा है, किसी के पास भी जॉब नहीं है, nobody has a job, तो उस केस में लोग बहुत सस्ते में काम करेंगे. People will be ready to work at a very less wage. In that case, the wage that will exist in the market will be low because people are willing to work at a lower wage. But beta, if the wages, if the unemployment rate is low, सबके पास नौकरियां हैं, कोई भी अनएम्प्लॉयड ही नहीं है, तो अगर मुझे उस टाइम पे किसी को जॉब पे रखना है तो मुझे उसे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अब उसके जिसको मैं रख रही हूं उसके पास बहुत सारी जॉब ऑफर्स है और कोई भी उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में. राइट? सो वी कैन से दैट जो भी हमारी वेज डिटर्मिनेशन होती है उसमें दो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंड आउट करते हैं. सो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर विद दैट टुडे. सो प्लीज राइट डाउन. देयर आर टू फैक्टर्स that stand out in case of wage determination. बेटा पहला फैक्टर क्या बताया मैंने? रिजर्वेशन वेज. सो प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट. रिजर्वेशन वेज. ये क्या है बेटा? द वेज at which an individual is indifferent between working and not working is called reservation वेज. तो बेटा जिस वेज पे एक इंडिविजुअल इंडिफरेंट है काम करने और ना करने के बीच में, उसे हम रिजर्वेशन वेज बोलते हैं. प्लीज राइट डाउन. मोस्ट employers
will pay a wage greater than reservation wage. तो ज्यादातर जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं वो रिजर्वेशन वेज के ऊपर पैसा देते हैं। अब वो क्यों देते हैं वो हम बाद में समझेंगे, आज ही समझेंगे, थोड़ी देर बाद में, बट समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला बेटा? सेकंड पॉइंट हमने बोला लेबर मार्केट कंडीशन। इसको भी मैं इलैबोरेट थोड़ी सी देर में करूंगी, बट अभी के लिए अंडर लेबर मार्केट कंडीशन एक चीज लिख लो, दैट द लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट, जितने कम लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, मार्केट में ज्यादा लेबर्स नहीं होंगे, उतनी ज्यादा वेज देनी पड़ेगी। द हायर द वेज। ओके बेटा, तो ये दो चीजें हमने यहां पे लिख ली हैं। अब इसी को हम इलैबोरेट करते हैं और इसमें हम एक सब पॉइंट लिखते हैं विच इज कॉल्ड बार्गेनिंग। ठीक है बेटा, अब समझो बेटा, बार्गेनिंग क्या होता है? बार्गेनिंग पावर वो पावर है जो बताता है कि वर्कर्स जब एम्प्लॉयर से सैलरी मांग रहे हैं तो वो कितनी सैलरी मांग पाएंगे, कितनी वेज मांग पाएंगे। ये जो बार्गेनिंग पावर है ये दो फैक्टर्स से डिपेंडेंट होती है, ठीक है। पहली डिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ जॉब पे और दूसरी डिपेंडेंट होती है लेबर मार्केट कंडीशन पे। नेचर ऑफ जॉब समझो। नेचर ऑफ जॉब ये कहता है कि आप जिस काम में लगे हुए हो वो काम कैसा है। अगर आपका काम, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिया था, कि अगर आपके काम में बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, जैसे अगर मैं मैकडॉनल्ड्स में सर्व कर रही हूँ फूड, आई डोंट नीड अ लॉट ऑफ स्किल्स, तो बेटा उस केस में मैं बहुत ज्यादा बार्गेन नहीं कर सकती हूँ और मुझे कम वेज एक्सेप्ट करनी होगी। बट अगर मैं सीईओ हूं किसी कंपनी की तो मैं कितनी भी वेज मांग सकती हूँ और मेरी बार्गेनिंग पावर बहुत हाई होगी। सो फर्स्ट फैक्टर जिस पे बार्गेनिंग पावर डिपेंड करती है वो है आपका स्किल सेट। बेटा सेकंड फैक्टर जिस पे बार्गेनिंग पावर डिपेंड करती है वो है लेबर मार्केट कंडीशन, ठीक है। ये वाला चीज जो हमने बोला ना, इसी को हम इलैबोरेट करेंगे। तो सेकंड फैक्टर हो गया लेबर मार्केट कंडीशन। तो बेटा प्लीज राइट डाउन द बार्गेनिंग पावर of the worker depends on two main factors. ओके बेटा, तो आपका पहला फैक्टर क्या हो गया? फर्स्ट फैक्टर इज हाउ मच, नहीं डायरेक्टली लिख लो, सॉरी। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द जॉब। ठीक है बेटा, सो नेचर ऑफ जॉब क्या हो गया? इफ द रिक्वायर्ड स्किल सेट for the job are not very high, बहुत बेसिक स्किल सेट चाहिए, उस जॉब को कोई भी कर सकता है अगर, है ना। सो एंड यू हैव लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब। बेटा प्लीज समझो, एक एस्ट्रोनॉट को या किसी भी एक साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं होंगी उस जॉब के लिए, बट शायद एक लो स्किल जॉब के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस इजीली आ जाएंगी, है ना। सो वी आर सेइंग दैट अगर आपका जो स्किल सेट चाहिए जॉब करने के लिए वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है और बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स हैं उस जॉब को भरने के लिए, यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स टू फिल आउट द जॉब, ठीक है, फॉर द जॉब, देन द वेज offered
विल बी लो। तो उस केस में आपको कम पैसा मिलेगा, ठीक है। बट इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आपकी जॉब बहुत हाई स्किल्ड है और आपको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, आप जो आपको चीज आती है वो और कोई नहीं कर सकता आपके फर्म में, तो बेटा फिर आपकी बार्गेनिंग पावर हाई रहेगी। सो इन कॉन्ट्रास्ट, इफ द जॉब requires high skills and it is difficult to replace the individual, then he or she will have high bargaining power। क्लियर हुआ ये? तो बार्गेनिंग पावर तब ज्यादा होगी जब आपकी जो नेचर ऑफ जॉब है वो हाई स्किल्ड है। बेटा सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट इसमें आता है बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, सो लेबर मार्केट कंडीशन रिलेटेड। सो सेकंड पॉइंट हो गया लेबर मार्केट कंडीशन, ठीक है बेटा। बेटा लेबर मार्केट कंडीशन का सेम है। अगर मैं सपोज इमेजिन करो आप एक जगह पे इंटरव्यू देने गए, वहां पर लाइन है, बहुत लंबी लाइन इंटरव्यू देने वाले लोगों की, तो बेटा आप कम पैसा मांगोगे, आप कम वेज में काम कर लोगे। बट आप एक जगह इंटरव्यू देने गए और आपको दिखता है कि आसपास रिसेप्शन में कोई नहीं बैठा हुआ, यू आर द ओनली वन सिटिंग फॉर द जॉब, देन यू विल आस्क हाई वेज, राइट। सो लेबर मार्केट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो प्लीज राइट दिस डाउन दैट इफ देयर इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, देन देयर विल बी हाई कंपटीशन। और बेटा अगर कंपटीशन ज्यादा होगा, implying that you have to work for low wages, implying lower bargaining power. So if there is high unemployment in the economy, there will be high competition, which will imply low bargaining power and thus lower wages. ठीक है बेटा। बट अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है तो फर्म्स को इजीली कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है मतलब जॉब्स तो बहुत है, नौकरियां बहुत हैं, पर लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो वर्कर इजीली नई जॉब ढूंढ सकता है, फर्म इजीली वर्कर नहीं ढूंढ सकता, तो फर्म हाई वेज ऑफर करेगा। सो प्लीज राइट डाउन ऑन द कॉन्ट्रेरी, if there is low unemployment, then it is more difficult to find acceptable replacement worker and workers can easily find a new job. So bargaining power will be high. I hope this is clear बेटा। तो हमने दो पॉइंट्स लिखे हैं बार्गेनिंग पावर से रिलेटेड। पहला हमने लिखा है कि नेचर ऑफ जॉब क्या है, और दूसरा हमने इस चीज पे हाईलाइट किया है कि लेबर मार्केट कंडीशन क्या है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो एफिशिएंसी वेजेस थ्योरी, एफिशिएंट वेज थ्योरी। पहले एक बार समझ लेते हैं फिर लिखेंगे।
बेटा एफिशिएंट वेज थ्योरी क्या कहता है कि यूजुअली जो फर्म्स होते हैं ना, वो आपको आपकी रिजर्वेशन वेज से ऊपर पैसा देना चाहते हैं। क्यों? बेटा पहली चीज वो ये सोचते हैं कि सपोज इमेजिन करो, पहले ये लिख के बनाने की जरूरत है, जस्ट इमेजिन इमेजिन कि मेरे फर्म के अंदर आज 10 न्यू वर्कर्स आए हैं। अब मेरे फर्म के हिसाब से मुझे उनको न्यू सॉफ्टवेयर स्किल्स देनी है, मुझे उनको न्यू टेक्निकल स्किल्स देनी है, मुझे उनको पूरा प्रोसेस समझाना है। इस पूरी ट्रेनिंग को करने के लिए मेरा बहुत सारा पैसा गया। मैंने अपने कुछ बाकी एम्प्लॉयज को ये करने के लिए लगाया और इसमें उनका टाइम भी वेस्ट हुआ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। मैंने कुछ लोगों को बाहर से भी बुलाया इस काम को करने के लिए, इनको ट्रेन करने के लिए। तो इन न्यू वर्कर्स पे मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया। अब इमेजिन करो कि अगर मैंने इन पे बहुत सारा पैसा खर्च करके इनको ये ट्रेनिंग दी और अगर 2 महीने बाद ही इनमें से 4 वर्कर्स छोड़ के चले गए किसी और कंपनी के पास, तो बेटा दैट इज माई लॉस। आई ट्रेन्ड देम, आई गेव देम ऑल द स्किल्स, एंड जस्ट आफ्टर 2-3 months they are just leaving my company. It's a loss for me. So since it is my loss, तो बेटा मैं ये लॉस तो नहीं बियर करना चाहूंगी। उससे अच्छा मैं क्या करूंगी, इनको रिटेन करके रखने के लिए मैं इनको हायर वेज ऑफर कर दूंगी, है ना। तो यूजुअली एफिशिएंसी वेज थ्योरी पहली चीज ये कहती है कि क्योंकि फर्म्स ये नहीं चाहते हैं कि टर्नओवर रेट हाई हो, मतलब सेपरेशन रेट हाई हो, है ना। तो फर्म्स क्या करेंगे, फर्म्स एंड लेबर्स को अपने पास रखने के लिए उनको ज्यादा वेज ऑफर करेंगे। सेकेंड थ्योरी बेटा, इसी में ये भी सोचा जाता है कि जब आप वर्कर्स को ज्यादा पैसा ऑफर करते हो तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई रहती है। अगर मैं आपसे 1000 मांग रही हूँ पर आवर और आप मुझे 2000 पर आवर दे रहे हो, देन आई विल ऑल्सो थिंक ना यार ये अच्छी कंपनी है, यहाँ पे अच्छे से काम करना है, सो आई विल वर्क इवन हार्डर। सो व्हेन यू गो अहेड एंड यू पे अबव द रिजर्वेशन प्राइस, तो इस केस में क्या होता है बेटा कि इस केस में आपको ऐसा लगता है कि आपका लेबर ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। तो ये दोनों चीजें एफिशिएंसी वेज थ्योरी के अंडर आती है। लिखते हैं आप इसे, सो प्लीज राइट डाउन। फर्म्स पे हायर देन रिजर्वेशन वेज because they want their workers to be productive. तो वर्कर्स को प्रोडक्टिव करने के लिए वो सोचते हैं कि ज्यादा वेज देनी चाहिए, सो दे वांट देयर वर्कर्स टू बी प्रोडक्टिव। एंड हाई वेज कैन हेल्प इन अचीविंग दिस गोल। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें प्लीज लिखो, फॉर एग्जाम्पल इफ वर्कर्स आर वर्किंग well, no firm will want to lose those workers. बेटा अगर वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं तो आप उनको लूज तो नहीं करना चाहोगे। अगर आप उनको सिर्फ रिजर्वेशन वेज दोगे तो वो कभी भी जा सकते हैं आप जॉब छोड़ के, क्योंकि वो इनडिफरेंट होंगे। बट अगर आप उनको ज्यादा वेज ऑफर करोगे तो वो स्टे कर जाएंगे। सो इफ वर्कर्स आर वर्किंग वेल, no firm wants to lose their workers, right? But by paying the reservation wage, an individual would be indifferent between staying and leaving. ठीक है बेटा,
जब आप उनको रिजर्वेशन वेज पे करते हो तब एक रेट होता है जिसे बोलते हैं हम टर्नओवर रेट। तो बेटा ये समझो जरा, जो हमारा टर्नओवर रेट होता है, ये टर्नओवर रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेशियो होता है दो चीजों का, द अमाउंट ऑफ सेपरेशन, कितने लोग सेपरेट हुए हैं, डिवाइडेड बाय द एम्प्लॉयमेंट। तो इमेजिन करो बेटा कि सपोज मैंने यहाँ पे, जो मैंने वहां एग्जाम्पल डाला था ना, मैंने 10 लोगों को एम्प्लॉय किया और 10 लोग छोड़ के चले गए, तो बाइट बेटा माई टर्नओवर रेट इज 4/10 into 100, 40%। ठीक है, सो टर्नओवर रेट ये बताता है कि कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं एज कंपेयर टू कितनी जॉब्स हैं, राइट। सो जब आप उनको सिर्फ रिजर्वेशन वेज ही पे करोगे, जब आप उनको ऐसी वेज पे करोगे जिसके बीच में वो इनडिफरेंट है बिटवीन स्टेइंग एंड लिविंग, तो वो डेफिनेटली छोड़ के जा सकते हैं। सो टर्नओवर रेट बहुत ही हाई होगा, और कोई भी फर्म नहीं चाहता कि टर्नओवर रेट हाई हो, क्योंकि अगर बार बार लोग छोड़ के जाएंगे तो हर नए इंसान को बार बार ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी, उसकी भी तो कॉस्ट है। सो प्लीज राइट डाउन दैट इफ फर्म पेज रिजर्वेशन वेज, the turnover rate will be very high. बेटा अगर टर्नओवर रेट हाई होगा तो क्या होगा? दिस विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग द न्यू employees every time there will be separation। तो बेटा जितनी बारी भी पुराने वाले छोड़ के जाएंगे, नए वालों को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होगा। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको रिजर्वेशन वेज से ज्यादा ही पे करो। देयरफॉर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? जब सेम लोग बार बार आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेम काम करते रहेंगे। अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 10 साल से हूं और मैं वही काम बार 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 कर रही हूं, तो मैं ज्यादा एफिशिएंट भी होंगी और ज्यादा प्रोडक्टिव भी होंगी। तो वो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बेटा तब आएगी ना जब यू विल कीप वर्किंग ऑन द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो मैं नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा लेओवर्स हो, उल्टा मैं ये चाहती हूं कि मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो मेरे साथ ही रहें, और वो सिर्फ तब हो सकता है जब मैं उनको ज्यादा वेज ऑफर करूंगी। सो टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, फर्म शुड ऑफर हायर वेजेस। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ बेटा। अच्छा, अब एफिशिएंसी वेज थ्योरी में ही ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझो, जो हमने अभी बताया। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा इसमें? कि जब आप वर्कर्स को ज्यादा पैसा ऑफर करते हो तो ऐसा लगता है कि वर्कर्स को अपने बारे में बहुत अच्छा लग रहा है कि ये काम तो बहुत अच्छा है, और जब उनको ऐसा लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल रहना चाहिए, ये मेरे साथ अच्छा, दे आर बिहेविंग वेल विद मी, वो मुझे अच्छा पे कर रहे हैं, तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव ज्यादा हो जाते हैं। सो सेकेंड पॉइंट ये कहता है दैट मोस्ट फर्म्स, प्लीज राइट डाउन बेटा, वांट देयर वर्कर टू बी more productive by paying more wage। Workers feel good about the firm and loyal to the firm। तो जब आप उनको ज्यादा वेज ऑफर करते हो, दे फील वेरी गुड अबाउट देमसेल्व्स, और वो बहुत लॉयल भी रहते हैं, और इसीलिए उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली बेटा एफिशिएंसी वेज थ्योरी क्या है?
क्या पढ़ा हमने इस पूरे में, क्या बोल रहा है एफिशिएंसी वेज थ्योरी? एफिशिएंसी वेज थ्योरी बेसिकली ये कह रहा है कि आप लोगों को रिजर्वेशन वेज से ज्यादा वेज ऑफर करो ताकि वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करें। ठीक है बेटा, तो ये हमारी हो गई एफिशिएंसी वेज थ्योरी। इसमें हमारे दो सब नोट्स हैं, प्लीज राइट डाउन नोट। बेटा एफिशिएंसी वेज थ्योरी के साथ साथ वो ये भी बोलता है कि वेज जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। सो इन विद इन एफिशिएंसी वेज थ्योरी द वेज मस्ट डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। ध्यान से समझो, पहले एक बारी समझ लो फिर लिखेंगे। पहला है बेटा नेचर ऑफ जॉब, इसको थोड़ा सा समझो। देखो सपोज मैं एक फैक्ट्री चला रही हूं और इस फैक्ट्री में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कितने दिनों के लिए मेरे यहाँ पे काम करते हैं। मतलब अगर कोई 1 महीना काम करे और छोड़ जाए, मेरे को उसका रिप्लेसमेंट इजीली मिल जाएगा। और अगर कोई महीनों काम करके भी ना छोड़े तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही तरीके का काम है। सपोज बिस्किट्स की फैक्ट्री है तो एक ही तरीके का काम है कि मशीन से सिर्फ बिस्किट रैप्ड बिस्किट्स को उठा उठा के रखना है। तो बेटा ऐसी जॉब्स जिसमें आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा तो कुछ स्किल की जरूरत नहीं है, तो वहां पर मुझे लोगों की लॉयल्टी की भी जरूरत नहीं है। वो ज्यादा टाइम रुके या ना रुके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेट ऑफ सेपरेशन कितना है, क्योंकि उसमें मेरे को उनको कुछ ट्रेन करने में बहुत एफर्ट नहीं है। वो आएंगे, मुझे उन्हें बस सिखाना है कि कैसे उनको बिस्किट्स को मशीन से उठाना है ना। तो अगर नेचर ऑफ जॉब ही ऐसी नहीं है जिसमें उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो, तो उसमें एफिशिएंसी का कोई मतलब ही नहीं है। और जहां एफिशिएंसी का ही मतलब नहीं है वहां पे मैं रिजर्वेशन वेज से ऊपर क्यों पे करूं? सो बेटा प्लीज राइट डाउन दैट फर्म्स सच एज हाई टेक फर्म्स सी employee morale and commitment as important factors and thus pay higher wage। आपने सुना होगा जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है वो इतने सारे बोनस कमिटमेंट बोनस और इंक्रीमेंट ये सब देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्हें फर्क पड़ता है एम्प्लॉय के मोराल से, एम्प्लॉय की कमिटमेंट से। बट बेटा जहां पर इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, जो काम बहुत रूटीन वर्क है, वहां पे आपको रिजर्वेशन वेज से भी काम बन जाएगा। हाउएवर in work which is routine and same kind of काम बार बार करना है, higher wage need not be paid। ठीक है बेटा, तो वहां पर मेरी एफिशिएंसी थ्योरी का भी कोई काम नहीं है। हायर वेज के बिना भी आपका काम बन जाता है। बेटा सेकेंड थिंग समझो, सपोजिटली मैं बात करती हूं इस केस में लेबर मार्केट कंडीशंस की। अब लेबर मार्केट कंडीशन क्या बोल रही है? अगर सब लोग ही अनएम्प्लॉयड हैं तो इसमें मैं आपसे मैक्सिमम एफिशिएंसी ले सकती हूँ बिना ज्यादा सैलरी दिए। इमेजिन करो कि इकोनॉमी में बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है और वो इंसान जिसने पीएचडी भी किया हुआ है, जिसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की हुई है, उसको भी जॉब नहीं मिल रही। तो अगर एक इकोनॉमी की ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक हाईली स्किल्ड वर्कर जिसने बहुत बहुत अच्छे से स्किल्स लिए हुए हैं, जिसका सब कुछ अच्छे से है, अगर उसको भी जॉब नहीं मिल रही है तो बेटा वो भी कम पैसों में काम करने के लिए तैयार रहेगा। सो जबकि एफिशिएंसी वेज थ्योरी बोलती है कि हाई स्किल्ड लोगों को रखने के लिए हमें ज्यादा पैसा देना चाहिए, बट बेटा लेबर मार्केट कंडीशन अगर बुरी हो
अगर ले ऑफ्स बहुत ज्यादा हाई हों तो उस केस में आप इनसे भी सस्ते में काम करवा पाओगे. सो प्लीज राइट दिस डाउन दैट अ लो unemployment rate makes it attractive for workers to quit and thus demand higher wage. ठीक है बेटा, ये हमने ऊपर भी अच्छे से समझा दिया. द नेक्स्ट हेडिंग इज wages, prices and unemployment. ओके बेटा, अब स्टार्ट करते हैं हम कि वेजेस डिटरमाइन कैसे होती है. अब देखो, जब हमें वेज डिटरमाइन करनी होती है तो एक इक्वेशन होती है जो हमें समझनी है. इक्वेशन है W इज इक्वल टू PE F U, Z. फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन. ओके बेटा, इसमें W स्टैंड्स फॉर वेज, PE स्टैंड्स फॉर expected prices, U stands for unemployment rate, and Z stands for other factors, जिसको बुक लिखती है कैच ऑल वेरिएबल. ठीक है बेटा, ये इनके सिंबल्स हैं. अब सबसे पहले हमें समझना है कि वेज जो है वो इससे, इससे और इससे, इन तीन चीजों से अफेक्ट हो रही है. तो हमें तीनों को एक एक करके समझना है. जो हम सबसे पहला फैक्टर समझेंगे वो होगा एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल. सो प्लीज राइट डाउन द फर्स्ट फैक्टर विच इज एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल. पहले समझेंगे, फिर देन वी विल राइट डाउन अकॉर्डिंग टू द आंसर. ओके बेटा, नाउ अंडरस्टैंड. भूल जाओ एक्सपेक्टेशन, भूल जाओ एक्सपेक्टेड प्राइस, भूल जाओ, सिर्फ प्राइस का सोचो. पहले सोचो एक बारी कि सपोजेडली आप एक वेज पे काम कर रहे हो. लेट्स से दैट आपकी वेज जो है वो 100 रुपीज पर डे की है. इस वेज से आप एक थाली खाते हो, और ये जो थाली है वो जो भी आपका लंच की थाली होती है और डिनर की थाली होती है बेटा, दैट कम्स फॉर ₹30. एवरी डे यू अर्न 100 रुपीज, उसमें से 30 रुपीज आप इस थाली पे स्पेंड करते हो. अब ऑल ऑफ अ सडन आप एक दिन इस वेंडर के पास जाते हो एंड दिस वेंडर टेल्स यू, नो सर, आज से 30 रुपीज की नहीं रहेगी. फ्रॉम टुडे दिस थाली इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40 रुपीज. नाउ थिंक अबाउट इट बेटा, अगर ये मैं लंच और डिनर में खा रही थी, अर्लियर आई वाज स्पेंडिंग 60. अब अगर मुझे यही को, इसी चीज को लंच और डिनर में खाना है, आई विल हैव टू स्पेंड 80. इट्स अ बर्न ऑन माई पॉकेट. मेरे को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है. सो क्या मैं ये 100 रुपीज में काम करना चाहूंगी? नो, आई ऑल्सो वॉन्ट मोर मनी विद इट. ठीक है, तो बेटा वर्कर्स को इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनको कितना पैसा नॉमिनल टर्म्स में मिल रहा है, मतलब कितना पैसा मिल रहा है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. बट उस पैसे से वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उस पैसे से वो कितना खा पा रहे हैं, क्या गुड्स खरीद पा रहे हैं, उससे उनको सारा फर्क पड़ता है. सो वर्कर्स आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट व्हाट वी कॉल एज द रियल इनकम. अगर मैं 100 रुपीज कमाती हूं और एक थाली का प्राइस 30 है, तो पहले मैं 3.33 थाली खरीद पा रही थी. बट अगर एक थाली का प्राइस 40 कर दोगे तो सिर्फ मैं 2.5 थाली खरीद पाऊंगी. दैट्स अ रिडक्शन इन माय रियल वेज. कितना मैं खरीद पा रही हूँ वो कम हो रहा है. सो बेटा जैसे ही प्राइस चीजों का बढ़ता है, आप चाहोगे कि आपकी वेज भी बढ़ जाए, आप ज्यादा वेज डिमांड करोगे. ये हो गया वर्कर की साइड से, फ्रॉम वर्कर्स साइड.
अब दूसरी साइड से सोचो, एम्प्लॉयर की साइड से सोचो। एक एम्प्लॉयर से अगर आप जाके बोलो कि सपोज ये एम्प्लॉयर, मैं ऐसी रैंडम एग्जांपल फिर से ले लेती हूँ, बिस्किट्स बनाता है। अब आपने इसको बोला कि बॉस मेरी थाली तो एक्सपेंसिव है, मेरे को इतने कम वेज में काम नहीं होगा, आप मेरी वेज बढ़ाओ। तो ये एम्प्लॉयर वेज बढ़ाने के लिए उसको पैसा भी ज्यादा कमाना होगा। अगर उसको आपको ज्यादा पैसा देना है तो उसको पैसा जो अर्न करना है वो भी ज्यादा होना चाहिए। और वो ज्यादा मनी कब अर्न करेगा? जब वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएगा। सो बेटा, ही विल अर्न मोर मनी ओनली इफ द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट इंक्रीजेस। सो जब प्राइस बढ़ेगा सिर्फ तभी तो वो आपकी वेज बढ़ाएगा। तो एम्प्लॉयर के साइड से भी पी और डब्ल्यू में डायरेक्ट रिलेशन है, और वर्कर की साइड से भी पी और डब्ल्यू में डायरेक्ट रिलेशन है। सो बेटा हम ये लिख सकते हैं कि पीई भूल जाओ, भी एक्सपेक्टेशन पे मत जाओ, सिर्फ प्राइस का सोचो कि प्राइस और वेज के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, चाहे मैं एम्प्लॉयर की बात करूं या वर्कर की बात करूं। पहले ये रिलेशन को एकदम क्लियर कर लो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। अब बेटा यूजुअली क्या होता है ना कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, एक एग्रीमेंट साइन करते हो अपने एम्प्लॉयर के साथ कि एक साल के लिए, अगले एक साल के लिए ये मेरा सर्विस अग्रीमेंट है, मैं आपके साथ इस वेज पे सो एंड सो काम करूंगी। अब सपोज आपने ये अपने वर्क एम्प्लॉयर के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर लिया कि एक साल के लिए मैं आपसे 100 रुपीज में काम करूंगी। अब अगर इस एक साल के अंदर इसी आपकी लंच की जो थाली थी उसका प्राइस बढ़ गया, सपोज द प्राइस ऑफ दैट थाली इंक्रीजेस, तो क्या होगा बेटा? आप तो कम अफोर्ड कर पाओगे। सो यू आर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट 1 year in advance. द ओनली वे टू इंश्योर कि आपकी कंजम्पशन कंसिस्टेंट रहे, क्या रहेगा? दैट यू डिटरमाइन द प्राइसेस इन एडवांस। आप जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, आप आज ही सोच लो ना कि एक साल के अंदर अंदर कितना प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे एक साल के अंदर। तो आप आज सोच लो कि एक साल में कितना प्राइस बढ़ेगा, और उसके बेसिस पर कि एक साल में कितना प्राइस बढ़ सकता है फिर आप पैसा मांगो। सो वेजेस डोंट डिपेंड ऑन एक्चुअल प्राइस, क्योंकि वेज तो पहले डिसाइड करनी पड़ेगी एक साल की। दे डिपेंड ऑन एक्सपेक्टेड प्राइस। और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आप पैसा भी आज ज्यादा मांगोगे। सो दैट इज वाई प्राइस की जगह पर हमने यहां पे एक्सपेक्टेड प्राइस रखा है। बेटा लेट्स राइट डाउन दिस एंटायर स्टोरी ना। आ जाओ, let's write down the answer for this. Let me just remove all of this. Okay, please write. So write down, workers do not care about nominal income, but about how many goods they can buy. Therefore, they are interested in real income. I hope ये clear हो गया बेटा आपको पूरा concept. तो बेटा रियल इनकम हो गई W/P, ये उनको सेम रखना है। तो अगर मुझे W/P सेम रखना है तो ये बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ाओगे ना। सो प्लीज राइट डाउन, देयरफॉर वर्कर्स डिमांड हायर नॉमिनल, नॉमिनल मतलब ये W, वो ज्यादा W मांगेंगे जब P बढ़ेगा। सो दे आस्क फॉर हायर nominal wage when price increases.
ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा, ये हमने लिखा वर्कर की तरफ से। अब सेकंड पॉइंट, सो बेटा सेकंड पॉइंट जो आपका हो गया वो हो गया हमारा एम्प्लॉयर की साइड से, हमने वर्कर की साइड से लिख दिया ना। सो प्लीज राइट डाउन द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दैट द एम्प्लॉयर does not care about nominal wage। एम्प्लॉयर को भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कि उसको वेज कितनी पे करनी है, उससे फर्क पड़ता है कि उसको रियल वेज कितनी पे करनी है। सो इवन एम्प्लॉयर डज नॉट केयर अबाउट द वेज, the employer also cares about the real wage. So please write down beta, the employer does not care about nominal wage, but the real wage they pay to the workers. So if price of good increases, they are willing to pay more. तो बेटा अगर मेरे गुड का प्राइस बढ़ेगा तो मैं ज्यादा पैसा भी देने को तैयार हूं। अगर मैं ज्यादा कमा रही हूं, इफ आई एम अर्निंग मोर, देन आई एम ऑल्सो विलिंग टू पे मोर फॉर इट। इज दिस क्लियर बेटा? सो बेटा ये आपके दो पॉइंट्स हो गए। अब हमने ये प्राइस से रिलेटेड लिखा है, अब हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस के बारे में भी थोड़ा बताना चाहिए। सो प्लीज राइट डाउन दैट इन रियलिटी contract, working contracts are signed in advance। तो बेटा अगर कॉन्ट्रैक्ट एडवांस में साइन हो गया तो जब असली में प्राइस बढ़ेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले ही सोच लो कि एक साल में कितना बढ़ने वाला है और अकॉर्डिंगली वेज मांगो। सो देयरफॉर द वर्कर्स should form expectation about wages and ask for more wage if they are expecting the price to rise। बेटा आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल इज नॉट द पॉइंट, यू शुड बी ऑल्सो राइटिंग इट इन द राइट वर्ड्स। अगर आप इसको करेक्ट वर्डिंग्स में नहीं लिखते हो तो पूरा का पूरा समझा हुआ खराब हो गया, राइट? सो दैट्स द फर्स्ट एस्पेक्ट। तो हमने बताया कि वेज और प्राइस एक्सपेक्टेशन का पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे आप सोचोगे कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा आप ज्यादा वेज भी डिमांड करोगे। बेटा कम टू द सेकेंड रिलेशनशिप अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। सो माय सेकेंड रिलेशनशिप इज विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये मैंने ऊपर भी आपको समझाया है, दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। बेटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या कहते हैं? अगर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है, लोगों के पास जॉब नहीं है, तो बेटा एज अ फर्म मैं लोगों को कम पैसे में ऑफर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि किसी के पास भी जॉब नहीं है, वो सस्ते में भी काम करेंगे। सो व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई, फर्म विल ऑफर लोअर वेज। और जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, मार्केट में जॉब्स नहीं है, तो एज अ वर्कर मैं भी कम पैसे में काम करने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है कि नौकरियां ही नहीं है। सो बोथ वर्कर एंड फर्म agree on a lower wage when unemployment rate is high. So please write down beta that when unemployment rate is high, firms offer lower wages. And since there is a lot of competition,
worker is willing to accept lower wage. तो बेटा फर्म कम पैसा ऑफर करेगा, वर्कर वो कम पैसा एक्सेप्ट कर लेगा और वेजेस लोअर सेट हो जाएंगे. सो व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि आपकी बार्गेनिंग पावर ऑटोमेटिकली लो हो जाती है. यहाँ पे भी पढ़ा लेबर मार्केट कंडीशन में, यहाँ पे भी पढ़ा लेबर मार्केट कंडीशन में. और क्योंकि आपकी बार्गेनिंग पावर लो हो जाती है, इसलिए आप अपना लो वेज में भी काम कर लेते हो. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. बेटा राइट डाउन द लास्ट फैक्टर. इसको इन्होंने बोला है कैच ऑल वेरिएबल. Z को बोला गया है कैच ऑल वेरिएबल. इस कैच ऑल वेरिएबल में बेसिकली हमारे पास दो मेन फैक्टर्स आते हैं. एक को बोलते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और दूसरे को हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन. ठीक है, सेम ही है एक्चुअली, बहुत सिमिलर बातें हैं. समझ लो पहले क्या है फिर लिखेंगे. तो बेटा सपोज इमेजिन करो कि आपके पास जॉब नहीं है. ठीक है, आप एक जगह पे जॉब मांगने गए, उन्होंने आपको बोला कि मैं आपको ₹100 पर डे ऑफर करूंगा. अभी आपके पास हाथ में कुछ भी नहीं है, तो आपको जो भी मिल रहा होगा आप उसको इजीली एक्सेप्ट करके ले लोगे. सो यू विल से अच्छा ठीक है यही दे दो एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग. नाउ बेटा इमेजिन करो कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेप इन करती है और गवर्नमेंट बोलती है कि जो भी लोगों के पास जॉब नहीं है, जो भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनको मैं 200 पर डे दूंगा. गवर्नमेंट ने 200 पर डे ऑफर कर दिया. तो क्या आप 100 पर डे में काम करोगे? नो. अब आप क्या बोलोगे कि ठीक है मैं काम तो करूंगा, बट जो मेरी मिनिमम वेज होगी वो एटलीस्ट अगर आप मेरे को 210 या 250 या 300 दोगे तब मैं काम करूंगी, क्योंकि काम ना करके भी मुझे 200 तो मिल ही रहा है. सो बेटा जैसे ही गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मार्केट में लेकर आती है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको हम पैसा देंगे, तो इससे फर्म्स को ज्यादा वेज ऑफर करनी पड़ती है, क्योंकि कम वेज में कोई भी काम नहीं करता. ठीक है, लेट्स राइट दैट डाउन बेटा. तो Z या अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की तरह है. तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होगी, अगर ये वेरिएबल्स मिलेंगे, तो बेटा कब आप काम करोगे? जब आपको ज्यादा वेज ऑफर होती है, तो इससे आपका वेज इंक्रीज होगी, बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होगी. सो प्लीज राइट डाउन. व्हेन देयर आर फैक्टर्स like unemployment insurance और मे बी एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन, जिसमें आपकी जॉब को प्रोटेक्ट करते हैं, it increases bargaining power of the labor. तो वर्कर की जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाती है जब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं. राइट. सो ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, since a labor gets gets money even for not working, he would be willing to work only at a high wage. ये समझ में आया? तो क्योंकि इस केस में आपको काम ना करने का भी गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो आप सिर्फ तब काम करोगे जब आपकी वेज रेट बहुत ज्यादा हाई होगी. सो बेटा सिंपली यू कैन से
this increases the wage rate asked by labor. मैं एक और लास्ट एग्जांपल देना चाहूंगी, इसे बोलते हैं मिनिमम वेज रेट। जैसे बेटा आज तक आपको जो वेज रेट ऑफर हो रही थी वो 100 ऑफर हो रही थी। अब गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और गवर्नमेंट ने बोला कि देखो द मिनिमम वेज जो इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करेगी वो 150 होगी। तो इससे क्या होगा, कोई भी आपको 100 ऑफर नहीं करेगा, सब लोग 150 ऑफर करेंगे। 150 से नीचे नो कंपनी कैन ऑफर नाउ। सो बेटा इससे भी तो वेज बढ़ जाएगी ना। सो ये जितने भी गवर्नमेंट एक्ट्स लेकर आती है, लाइक मिनिमम वेज रेट, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, लाइक एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन, बेटा ये सारे वेरिएबल्स को उन्होंने एक साथ जेड के अंदर लिख दिया। तो ये जो वेरिएबल्स है हमारे, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन, ऑल दीज वेरिएबल आर कॉल्ड एज जेड। और इन वेरिएबल्स की वजह से आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। तो जब जेड बढ़ता है तो उससे आप जो वेज डिमांड कर सकते हो वो भी बढ़ती है। सो बेटा वी हैव डन दिस इंपॉर्टेंट रिलेशन टुडे। क्या क्या हमने देख लिया कि वेजेस जो हैं वो एक्सपेक्टेड प्राइस से पॉजिटिवली अफेक्ट होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट से नेगेटिवली अफेक्ट होती हैं, और ये कैच ऑल वेरिएबल जेड से पॉजिटिवली अफेक्ट होती है। अगेन बेटा दिस इज अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन दैट विल कम इन एग्जाम। ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, ये कैसे आएगा। सो राइट डाउन द क्वेश्चन। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट determine wage rate? ठीक है, एक ये क्वेश्चन आ सकता है। बेटा सेकंड क्वेश्चन जो आ सकता है, हाउ इज वेज रिलेटेड टू कैच ऑल वेरिएबल? तो अगर सिर्फ कैच ऑल वेरिएबल पे ही क्वेश्चन आ जाए तो उसमें बेटा आपको ये तो बताना ही है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन, बट यहां पे ये भी लिख देना दैट व्हेन गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मिनिमम वेज it increases bargaining power of worker. Hi, good evening everyone. Beta, today the aim is to go ahead and finish chapter 6 of Blanchard. We have already gone ahead and we have already covered some part of Blanchard. So I've already gone ahead and I have taught you what is the efficiency theory. We also talked about what is wage determination. Today I will go one step ahead and I will talk about the price determination. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में ना कैच ऑल वेरिएबल क्या होते हैं, और ये इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी बेटा। ये इक्वेशन थी W is equal to PE F of UZ, ये वाला हमने पढ़ लिया था। आज I will go ahead and I will continue this lecture. So please write down the topic for today. And the topic that I have in mind is called price determination. Right? Price determination. Okay, beta. Now, whenever we want to talk about price determination, we always, पहले समझ लो फिर हम लिखेंगे, तो we always go ahead and we go towards the firms. ठीक है? Firms क्या करती हैं? Firms production करती हैं, और ये प्रोडक्शन करने के लिए फर्म्स बेसिकली एक इक्वेशन पे डिपेंडेंट होती हैं जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, अभी कुछ नहीं लिखना है, प्लीज पहले समझो बेटा। व्हेन आई से y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका क्या मतलब है कि y x पर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे ये x चेंज होगा वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये सब y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये होता है ना। सो बेटा नाउ व्हेन आई गो अहेड एंड से प्रोडक्शन फंक्शन, इसका क्या मतलब है,
दैट आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट। तो मैं कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूँ वो लेबर और कैपिटल पे डिपेंडेंट होगा, इसको प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। अब हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं ना, हम एज्यूम कर रहे हैं एक लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन इस चैप्टर के अंदर। So what we are assuming is going to be a linear production function. That means we will say y is equal to labor. जितना लेबर होगा उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगा, लेबर और आउटपुट बराबर के हैं। बट आई एम गोइंग टू इंक्लूड अ फैक्टर ए, एंड बेटा दिस फैक्टर ए इज कॉल्ड द टेक्नोलॉजी फैक्टर। This factor A is called the technology factor. So I hope this is clear to you, beta. I am saying output depends on the input. Labor input है, जैसे जैसे labor increase होगा output increase होगा, and ये जो A है इसको हम बोलते हैं अपना technology factor. ठीक है बेटा? अच्छा, now let's write this down. So please beta go ahead and start writing with me. So write down that the price set by firms depend on the cost that firms face. तो जो प्राइस फर्म सेट करते हैं वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी कॉस्ट लग रही है। ज्यादा कॉस्ट लग रही है तो ज्यादा प्राइस, कम कॉस्ट लग रही है तो कम प्राइस, है ना बेटा। अब ये जो कॉस्ट है ये डिपेंड करती है कि मेरा प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है। सो प्लीज राइट डाउन, कॉस्ट इन टर्न डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन फंक्शन। सो बेटा प्राइस डिपेंड कर रहा है कॉस्ट पे और कॉस्ट डिपेंड कर रही है प्रोडक्शन फंक्शन पे। अब हम प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन बच्चे? प्रोडक्शन फंक्शन इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। एक रिलेशनशिप जब हम बनाते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में तो उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। जैसे बेटा y इज इक्वल टू a इंटू n, ये प्रोडक्शन फंक्शन है। यहां पे हम लिख लेते हैं दैट y इज द आउटपुट, a इज द टेक्नोलॉजी फैक्टर एंड n इज द लेबर। सो वी आर सेइंग आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट। ठीक है बेटा, अब समझो, देखो इसमें जो ए है ना ये टेक्नोलॉजी भी हो सकती है और इसको हम लेबर प्रोडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो हमारे लेबर की कितनी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी मतलब देखो ध्यान से समझो, ट्राई टू लुक हियर बेटा। सो इफ आई से y इज इक्वल टू a इंटू n, तो दिस इंप्लाइज दैट y by n will be a. So suppose I tell you that beta there are 100 units that I produce and there are 10 labors that I have. तो बेटा 100 by 10 क्या हो गया? आउटपुट पर लेबर हो गया ना, आउटपुट पर लेबर मतलब हर लेबर की कितनी प्रोडक्टिविटी है वही तो ये ए है ना। So basically this is called output per labor and this tells me the productivity of the labor. This is A. That's the productivity of the labor. So labor productivity is nothing but output per labor. एक और चीज है जो समझनी होगी बेटा कि ये ना बहुत ही एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है। आइडियली प्रोडक्शन फंक्शंस इतने सिंपल नहीं होते हैं, आइडियली प्रोडक्शन फंक्शंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट यहां पर हमने एक बहुत सिंपल कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल प्रोडक्शन फंक्शन एज्यूम किया है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल माने क्या? दैट इज एनी प्रोडक्शन फंक्शन व्हिच इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट टू द इनपुट। तो ये देखो बेटा, जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू ए एन, सपोज मैंने बोल दिया कि a ना 4 है, मतलब y इज इक्वल टू 4n।
तो अगर मैं लेबर 1 यूनिट लगाती हूं तो आउटपुट कितना हो जाएगा 4। अगर मैं लेबर को डबल करती हूँ तो आउटपुट कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8। अगर मैं लेबर को 3 करती हूँ तो आउटपुट कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12। सो बेटा एज यू विल स्केल द लेबर योर आउटपुट विल ऑल्सो स्केल। दैट इज कॉल्ड डबल ही हो रहा है ना, जैसे लेबर को डबल कर रहे हो 1 से 2 किया डबल किया आउटपुट भी डबल हो गया। लेबर को 3 टाइम्स किया 1 से 3 आउटपुट भी 3 टाइम्स हो गया। सो व्हेन योर आउटपुट इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेटली स्केलिंग टू योर इनपुट बेटा दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। And in this class, we will assume a CRS production function. So we are assuming, this is an assumption that we have a CRS production function. ये मेरी एक assumption है इस class के लिए। ठीक है बेटा, आगे देखो। See, if I tell you that y is a into n, in our class for today, we assume that a is equal to 1. This is my assumption today that a is equal to 1. So beta, if a is 1, then I will have y is equal to 1 into n. So this means I will have y is equal to n. मतलब जितना आउटपुट प्रोड्यूस करोगे वो कितना होगा जितना इनपुट। अगर 10 लेबर है तो 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, 20 लेबर है तो 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। Now let's define a term that is called as marginal cost of production. So beta, what is marginal cost of production? क्या होती है? आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। In today's lecture, I will not only finish this, but I will also do some assignment questions that can come in exam. So please be very sincere. इसको एंड तक अच्छे से हमें समझना है, क्योंकि एंड में मैं बहुत सारे ट्रू फॉल्स, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन करने वाली हूँ। सो द लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, लेट अस कंटिन्यू। सो नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस बेटा। नाउ आई एम गोइंग अहेड एंड आई एम आस्किंग यू व्हाट इज गोइंग टू बी योर marginal cost of production, right? So what is marginal cost? Change in cost as you change the inputs, or in other words, the additional cost of additional inputs. तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? वो बोलता है दैट हाउ योर टोटल कॉस्ट विल चेंज एज योर इनपुट चेंजेस। ठीक है, हमारे केस में समझो, जब मैंने एक एक्स्ट्रा लेबर को एम्प्लॉय किया तो बेटा एक्स्ट्रा कितना पैसा दोगे आप उस लेबर को? उसकी वेज के बराबर। यू विल पे हिम द वेज व्हेन यू एम्प्लॉय वन मोर लेबर। सो इन अवर केस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग an additional, sorry, not here, input beta. So marginal cost is cost of producing an additional unit of output. यहाँ ना y कर दो, additional output. हाँ, so now understand beta, cost of product that we have. What is the cost of the product? Product कब बन रहा है? मैं एक extra unit कब बना रही हूँ बेटा? जब मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट को बना रही हूं, when I am going ahead and I am employing one more unit of labor, एक लेबर एक्स्ट्रा लगाने से एक यूनिट आउटपुट का एक्स्ट्रा बनता है, और ये एक लेबर को लगाने का जो कॉस्ट है वो है जो हम उसको वेज पे कर रहे हैं। सो द मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट इट इज द वेज। सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग विद मी। Write down the marginal cost of production is the cost
of producing one more unit of output. In our case, देखो बेटा y इज इक्वल टू m था, जितना लेबर उतना ही आउटपुट। तो अगर मैं लेबर 1 से बढ़ाऊंगी तो आउटपुट 1 से बढ़ेगा, और लेबर को 1 से बढ़ाने के लिए वो एक एक्स्ट्रा लेबर को उसकी वेज देनी पड़ेगी। सो द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग one more unit of output is the wage. क्लियर बेटा? अब बहुत ध्यान से समझो। देखो, अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करती हूँ, इफ आई टॉक अबाउट परफेक्ट कंपटीशन, देन इन परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस and the wage are supposed to be equal to each other. In perfect competition, price and wage are set equal to each other, है ना? मतलब जो प्राइस होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। इफ यू रिमेंबर, एक परफेक्ट कंपटीशन बेटा ऐसा चलता है, ये हमारा हो गया AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू P, ये होता है मार्जिनल कॉस्ट, और जहां पे दोनों मीट करते हैं उतना आउटपुट हम प्रोड्यूस करते हैं। So in perfect competition, price and marginal cost are equal. But usually market में perfect competition नहीं होता, imperfect competition होता है। So usually, however, in markets, perfect competition doesn't exist. So beta, what do I mean when I say perfect competition does not exist? I mean that the price that I will be keeping, therefore, the price will be above marginal cost. हम प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर रखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं रखते हैं। तो बेटा जो हमारा प्राइस होता है वो हो जाता है 1 plus m times the marginal cost, where m is called the markup. मतलब हम वेज से थोड़ी ऊपर मार्जिन, मतलब वेज से थोड़ी ऊपर या मार्जिनल कॉस्ट से थोड़ी ऊपर प्राइस को रखते हैं, और उसको हम बोलते हैं मार्कअप। तो जब जैसे सपोज आपने बोला मुझे बेटा दैट मैम आई वांट टू कीप अ मार्कअप ऑफ 10%, मतलब अगर आप वेज 10 रुपए दे रहे हो तो आप जो प्राइस रखोगे वो 11 रुपए रखोगे। 10%, 10% of 10 rupees you will keep as your markup, as your profit. Are you getting it? So let's say that the wage is 10 rupees and you tell me, ma'am, I want to keep a markup of 10%. So बेटा markup की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10% of 10, तो ये हो गया 10 by 100 into 10, that means 1. तो बेटा जो आपका प्राइस आएगा वो हो जाएगा 1 plus m into w, माने 1 plus 1 into w. Not 1 plus, sorry, 1 plus m into w, और ये जो पूरा इसको आप अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मार्कअप कितना रखा है? 10% ना, सो 10% into w, तो बेटा हो जाएगा 1 plus 10 by 100 into w, तो बेटा ये हो जाएगा 1 plus 10 by 100 into 10, and this will be 11. So जो आप प्राइस रखोगे वो है वेज प्लस ये जो मार्कअप आपने कैलकुलेट किया है वेज के ऊपर 10% of 10, इसको ऐड करके आपको जो प्राइस है वो मिलेगा। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, है ना? तो बेटा जो मार्कअप होता है दैट इज ओवर एंड अबव वेज। इस पे आज एक न्यूमेरिकल करेंगे एंड में। सो हाउ मच, व्हाट इज द मार्कअप? The amount that you, the price that you set over and above the wage. Please write down. Write down the equation beta. P is equal to 1 plus m into w. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। प्लीज लिखो, m is the markup of the price over the cost. If we have
perfect competition, m will be 0. बेटा अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो ये m 0 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगी तो I will get p is equal to 1 plus 0 into w. That means I will get p is equal to w. तो प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाएगा, है ना. However, if markup is greater than 0, अगर मार्कअप पॉजिटिव है, then price will be more than wage. जैसे यहां था, जब मार्कअप को 10% रखा तो जो प्राइस आया ना वो कितना आया बेटा, प्राइस आ गया आपका 11 और वेज कितनी थी 10. तो अगर हम अपने लिए पॉजिटिव मार्कअप रखेंगे तो प्राइस जो है वो वेज से ज्यादा आएगा. कितने अमाउंट से, बाय द फैक्टर इक्वल टू 1 प्लस m. इस फैक्टर से ज्यादा आ जाएगा. ठीक है बेटा. ओके ओके. नाउ what I want to go ahead and do is the following. Let us define the two relations together. So if you remember, in the last class, beta, we did something which is known as a wage setting relation. ये जो वेज सेटिंग रिलेशन हमने किया था, ये वेज सेटिंग रिलेशन हमने एक्सपेक्टेड प्राइस के साथ किया था. क्या लिखा था हमने बेटा, that W is equal to PE F U Z. ये वेज सेटिंग रिलेशन था. Now, suppose let's assume that P is equal to PE. मतलब जो भी हमारे लोग हैं इकोनॉमी के, वो एग्जैक्टली प्राइस को डिटरमाइन कर पा रहे हैं. दे आर एग्जैक्टली एबल टू टेल दैट प्राइस इन द इकोनॉमी विल बी दिस मच. वो सही एक्सपेक्टेशन फॉर्म कर पा रहे हैं, वो एक्चुअल प्राइस बता पा रहे हैं. सो प्राइस और एक्चुअल प्राइस और एक्सपेक्टेड प्राइस वो बराबर हो रहे हैं, right? So if people are able to form the correct expectations, right? I will talk about expectations in the coming classes. But abhi ke liye, if people are able to form the correct expectations, then beta price and expected price will become equal to each other. So instead of PE, I can write P and I will get W is equal to P F U Z. So from here I will get W by P is equal to F of U Z. This relationship is called as the price as the wage setting relation. ठीक है, इसको ना प्लॉट भी कर सकते हैं. So let's say that I take unemployment rate here. अब एक बारी बहुत ध्यान से सोचना है हमने. देखो, जब हमने इनके बीच में, suppose I take real wage here, when I am making a relationship between the real wage and unemployment rate. What is the relationship I had taught you in the last class? Negative relationship. Why? What did I teach you? I taught you that beta, when unemployment increases, ज्यादा लोग हैं मार्केट में जिनके पास जॉब नहीं है. When unemployment rate increases, then beta competition will increase. ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ा है. When competition will increase, तो इमेजिन करो एक रूम जो फुल ऑफ अनएम्प्लॉयड लोग हैं, अगर इनको जॉब के लिए बैठना है, they will be willing to work at a lesser wage. So the wage that they will charge will decrease. They will work for a lower wage, है ना. So बेटा ये हो जाता है नेगेटिव रिलेशनशिप कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी, people will be willing to work at a lower wage. People will have lower bargaining power, right? People will have lower bargaining power. Clear हुआ? ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ा है ना. So we can write that the higher the unemployment rate, the lower the real wage. ओके बेटा, इसको हमने बोल दिया वेज सेटिंग रिलेशन.
अब हम आते हैं प्राइस सेटिंग रिलेशन पे। बेटा प्राइस सेटिंग रिलेशन है कि प्राइस कैसे सेट होते हैं, मैंने अभी आपको सिखाया दैट P इज इक्वल टू 1 प्लस M इंटू W। अच्छा सपोज मुझे यहां से भी W बाय P निकालना है, तो मैं P को इस साइड ले जाती हूँ और इसको यहां ले आती हूँ। सो आई विल गेट 1 अपॉन 1 प्लस M इज इक्वल टू W बाय P, है ना। बेटा मार्कअप तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे मार्कअप हमने एक नंबर पे फिक्स कर लिया 10%, 5%, 7%, मार्कअप एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। सो इफ मार्कअप इज अ कांस्टेंट वैल्यू तो 1 प्लस M भी कांस्टेंट होगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस M भी कांस्टेंट होगा। सो बेटा इफ दिस इज कांस्टेंट that means I am equating the real wage to some constant. I am equating the real wage to some constant. So बेटा इस केस में जो प्राइस सेटिंग रिलेशन होता है वो ये बोलता है कि आपकी जो रियल वेज होगी वो एक कांस्टेंट लेवल पे होगी। तो हमने क्या किया, अपनी रियल वेज को यहां रखा और इसको एक कांस्टेंट से इक्वेट कर दिया, एंड दिस इज कॉल्ड एज द प्राइस सेटिंग रिलेशन। सो प्राइस सेटिंग रिलेशन बताता है कि एक्चुअल में जो फर्म्स हैं वो कितनी वेज दे सकते हैं। दिस इज फ्रॉम द फर्म साइड, क्योंकि ये मार्कअप तो फर्म की साइड से था ना, कि उन्होंने जो प्राइस सेट किया है वो वेज से कितना ऊपर है। सो प्राइस सेटिंग रिलेशन determines the real wage that will be paid by the firm, right? Whereas the wage setting relation is what the laborers are asking, and it depends on the bargaining power of the labor. Clear hua? So beta please write down the price setting relation determines the real wage paid by the firm. ओके बेटा। अच्छा एक बात ध्यान से समझो, मैंने निकाला दैट रियल वेज पेड बाय द फर्म विल बी 1 अपॉन 1 प्लस M। सो बेटा व्हेन दिस M विल इंक्रीज, जैसे जैसे ये M इंक्रीज होता है मतलब डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है। अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है, सॉरी मतलब फ्रैक्शन डिक्रीज होती है, जैसे जैसे M इंक्रीज होता है डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है, तो बेटा जो ये फ्रैक्शन है वो पूरी की पूरी डिक्रीज हो जाएगी। तो जब ये फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो फ्रैक्शन इसके बराबर है, मतलब रियल वेज भी डिक्रीज हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? लुक एट इट अनदर वे। सपोज बेटा मैं कह रही हूं कि मैंने मार्कअप बढ़ा दिया है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मैंने वेज जो है ना वो 10 रुपीज पे रखी हुई है। अब जो मेरा मार्कअप था बेटा, मार्कअप था 10%, तो जो मैंने प्राइस सेट किया होगा वो 11 रुपीज किया होगा। 10% अबव द मार्कअप है ना, तो मेरा जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस M इंटू W। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 बाय 100 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 11। तो जब मेरी वेज 10 रुपीज थी और मार्कअप 10% था तो प्राइस 11 आ रहा था। सो बच्चे व्हाट विल बी योर रियल वेज? Your real wage will be W by P. That means 10 by 11. ये real wage हो गई। Now, suppose I am telling you that बेटा I am increasing the markup to 20%. मैंने markup बढ़ाकर ना 20% पे कर दिया। Can you tell me what will be the price in this case? 1 plus M into W. But अब markup ही 20% है, तो ये हो जाएगा 1.2 into 10, तो ये हो जाएगा बेटा 12। सो जब मार्कअप मैंने 20% पे किया, जब मैंने मार्कअप को इंक्रीज कर दिया कि मैं अपना 20% अबव वेज रखूंगी, मेरा प्राइस आ गया 12। बेटा व्हाट विल बी योर रियल वेज? 10 डिवाइडेड बाय 12। आर यू गेटिंग इट? अच्छा नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट। व्हेन आई टेल 10 डिवाइडेड बाय 11, है ना, 10 डिवाइडेड बाय 11, क्या होगा आंसर इसका? This will be 0.90. So your real wage is 0.90. Now can you tell me what will be the value when you do 10 divided by 12?
क्या आंसर आएगा? 0.83, राइट? द आंसर यू विल गेट विल बी 0.83. सो जब आपका मार्कअप 10% था, रियल वेज 0.90 थी, और जब मार्कअप 20% पे हो गया तो रियल वेज 0.83 पे हो गई. मतलब एज द मार्कअप इज इंक्रीजिंग, द रियल वेज, जो फर्म्स रियल वेज ऑफर कर रहे हैं वो गिर रही है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली वेजेस गिर जाएंगी, राइट? सो नाउ एक और तरीके से सोच सकते हैं. देखो, जब मार्कअप बढ़ेगा, फर्म्स चीजों को महंगा कर रहे हैं, आपको तो सैलरी सेम मिल रही है, चीजें महंगी हो रही हैं, तो रियल टर्म्स में आप कम खरीद पाओगे ना. सो प्लीज राइट दिस डाउन बेटा. व्हेन फर्म्स increase markup, it increases the price of the product. अब प्राइस बढ़ रहा है, so since the nominal wage is constant, मतलब W को मैंने कांस्टेंट रखा है, इंक्रीजिंग प्राइस डिक्रीजेस रियल वेज. समझे बेटा? आपको सेम पैसा मिल रहा है, आटा दाल चीनी एक्सपेंसिव हो रहा है, तो आप कम आटा दाल चीनी खरीद पाओगे ना. दैट मीन्स योर रियल वेज विल डिक्रीज. सो इंक्रीजिंग प्राइस डिक्रीजेस द रियल वेज. अब हमने ये प्राइस सेटिंग रिलेशनशिप को ना, वी हैव टू, ये हमारा प्राइस सेटिंग रिलेशनशिप हो गया, ये हमारा वेज सेटिंग रिलेशनशिप हो गया. अब इन दोनों से बेटा वी नीड टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कंडीशन. So how can we find the equilibrium condition? Please write down equilibrium. और ये equilibrium निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? We will go ahead and we will have the price setting relation here, the weight setting relation here, और ये हमारा हो गया 1/1 plus m. बेटा wherever the price setting relation and the weight setting relation are equal to each other, this is called your equilibrium. This is called your equilibrium. ये आपके डिफरेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं, बट जहां पे ये दोनों बराबर होते हैं, इसे बोलते हैं हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. क्लियर हुआ? सो प्लीज राइट डाउन दिस बेटा. प्लीज राइट दिस डाउन दैट whenever, write down the natural rate of unemployment is the unemployment rate such that the wage setting relation equals to the price setting relation. Is this clear? Okay. अब इस चीज को एक बार थोड़ा सा और समझो. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को ना बेटर भी समझाना है. बेटा नेचुरल मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं एक्ट नेचुरली, नेचुरल मतलब प्रोवाइडेड बाय द नेचर, व्हेन देयर इज नो चेंज. सो एक्चुअली नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब एक इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है, मतलब जितने भी लोगों को जॉब्स चाहिए उन सबको जॉब मिली होती है. सो बेटा इफ एवरीवन हु इज लुकिंग आउट फॉर अ जॉब हैज अ जॉब, जिनको भी जॉब चाहिए उन सबके पास जॉब है, तो फिर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है? व्हाट इज दैट? सो बेटा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कि किसी भी इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो बेसिकली 3-4 तरीके की होती है ना. सो अनएम्प्लॉयमेंट in any economy can be frictional, it can be structural, it can be cyclical.
बेटा फ्रिक्शनल वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो तब होती है जब आप एक जॉब छोड़ के दूसरी ज्वाइन करते हो, तो फ्रिक्शनल समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, दिस पर्सन he has left his job on 31st of August and he has to join a new job on 10th of September. तो बेटा ये बीच के दिनों के लिए he is unemployed, but he will get back a job ना, इसकी जॉब ऑलरेडी साइंड है, बस ये 9 दिन बीच में अनएम्प्लॉयड है. दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल. The second is called बेटा structural unemployment. Structural क्या होती है? For example, I know how to use a computer. Now tomorrow you come up and you tell me कि आज से कंप्यूटर पे काम बंद, सुपर कंप्यूटर्स पे काम स्टार्ट, and I don't know how to use a super computer. So बेटा you will kick me out of my job. So when you lose your job because of technology, that is called a structural unemployment. अब तीसरा आता है cyclical unemployment. ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो हम इकोनॉमी में साइकिल्स की वजह से क्रिएट करते हैं. साइकिल्स मतलब क्या? हर इकोनॉमी में एक पीरियड होता है बूम का, फिर रिसेशन, फिर बूम. ये रिकवरी पीरियड है, ये रिसेशन पीरियड है. इसको एक्चुअली डिप्रेशन भी बोल सकते हैं यहाँ वाले को. सो एक इकोनॉमी बूम से रिसेशन, डिप्रेशन होते हुए वापस रिकवर करके बूम में जाती है. जब इकोनॉमी बूम के पीरियड में, व्हेन द इकोनॉमी इज इन द पीरियड ऑफ द बूम, द इकोनॉमी विल हैव मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, एवरीबडी विल बी एम्प्लॉयड. When the economy is in recession or depression, it will have unemployment. Like जैसे कोविड के एकदम बाद इकोनॉमी रिसेशन में चली गई थी, people were unemployed, right? So beta de-unemployment, which is due to the cycles, that is called cyclical unemployment. अब full employment क्या है? Full employment is when everybody is employed. अगर सबके पास जॉब है, that is called full employment. But ये full employment के होते हुए भी इस full employment में हम assume करते हैं कि दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, और वो है फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल. तो अगर एक इकोनॉमी में सबके पास जॉब है, everyone has job, सिर्फ दो तरीके के लोग अनएम्प्लॉयड हैं. एक जो एक जॉब छोड़ के दूसरी ज्वाइन कर रहे हैं, और दूसरे जो टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब से निकाले गए हैं, और उसके अलावा सबके पास जॉब है, एवरीबडी हैज अ जॉब. देन बेटा दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये नेचुरली क्रिएट हो रहा है, ये किसी रीजन से क्रिएट नहीं हुआ कि रिसेशन है, डिप्रेशन है या कुछ भी और इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. ना ना, दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज एग्जिस्टिंग बिकॉज दीज टू थिंग्स आर नेचुरल. ये अपने आप से चली जाएंगी. ये नई टेक्नोलॉजी सीख लेगा तो जॉब मिल जाएगी, जॉब है बट इसको टेक्नोलॉजी नहीं आती, और ये जैसे अपनी वापस नई ज्वाइन करेगा तो जॉब मिल जाएगी. सो नेचुरल मीन्स द अनएम्प्लॉयमेंट विच इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एंड ओनली टू अनएम्प्लॉयमेंट विल एग्जिस्ट. नाउ इन दिस केस बेटा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू के नीचे एक सबस्क्रिप्ट UN. ठीक है, इसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. So natural rate of unemployment is that unemployment where only two unemployments exist, frictional and structural. Rest everyone is employed in the economy. अब हमने क्या बोला कि जहां पर ये वेज सेटिंग और प्राइस सेटिंग रिलेशनशिप्स इक्वेट होते हैं, उससे जो इक्विलिब्रियम आता है उसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. That is actually the true unemployment. यहाँ पे सबके पास जॉब है, इस रेट पर, इस पॉइंट पे ये जो इक्विलिब्रियम आया है, everyone has a job. The only two people unemployed are structural and frictional. Is this clear? Okay. The position of the wage setting and price setting relation curves determine the equilibrium and the unemployment rate. At any given unemployment rate,
higher unemployment benefit leads to higher real wage. So, we understand this, that as Z increases, W by P is a function of U and Z and a positive function of Z. So as Z increases, W by P increases. Now, if the real wage increases and I don't want to change the real wage, then what will I do? I will simultaneously increase the unemployment rate. The moment the unemployment rate will increase, then there will be more competition and real wage will fall. So an increase in Z, which causes real wage to increase, must be compensated with increase in U, which will cause the real wage to decrease. By letting firms increase their prices given wages, less stringent enforcement of antitrust legislation leads to decrease in the real wage. Again, as prices increase, automatically W by P decreases, so real wage decreases. So let's see this one. This is when there is an increase in Z. When Z increases, wage setting relation shifts upwards. So there is an upward shift of the wage setting relation. When the wage setting relation shifts upward, the new equilibrium is with the new intersection at A dash. So the unemployment rate increases. So increase in Z causes increase in real wage. Correspondingly, the unemployment rate increases, causing the real wage to decrease. So the equilibrium is maintained. An increase in unemployment benefit leads to increase in natural rate of unemployment. Markups and natural rate of unemployment. An increase in the markup. So when mu increases, 1 plus mu also increases. 1 upon 1 plus mu decreases. So the price setting curve shifts downwards because this is decreasing. And the new intersection is at A dash with higher rate of unemployment. And this makes sense. If firms keep more profit to themselves, if firms want more profit, firms are going to charge higher prices. More profit means more price you will charge. And more price would mean decrease in real wages. And when real wage decreases, then less people will be willing to work. So unemployment rate will automatically increase. So increase in markup decreases the real wage. And because real wage is lower, people will not work. So unemployment rate will increase. Because the equilibrium rate of unemployment reflects the structure of the economy. A better name for natural rate of unemployment is called structural rate of unemployment also. So because it tells about the structure of the economy, tells how your economy looks, therefore it is also called the structural rate of unemployment. From unemployment to employment. This is very simple. See, what is L? Labor force. Unemployed plus employed, right? If I divide on both sides by capital L, I will get 1 is equal to, this is U by L, unemployment rate, plus this is employment rate. So employment rate will be nothing but 1 minus unemployment rate, and unemployment rate will be nothing but 1 minus employment rate, right? So this is what we have written. Unemployment rate will be 1 minus N by L. N by L is employment rate. Now, if we have U is equal to 1 minus N by L, L is the number, N is the number of people employed. You can write it by N, you can write it by E. They're synonymous, same. So if U is equal to 1 minus N by L, then from here I will get N by L is equal to 1 minus U, this one.
So from here I will get N is equal to 1 minus U into L. Now when U is equal to UN, which means unemployment is at equilibrium, then after I put instead of U, UN, I get a value of N. This is called NN. This is called natural level of employment. So when, what does it mean? When I find this equilibrium from wage setting and price setting relation, I get this equation, that I get this equilibrium unemployment rate called natural level of unemployment. Now, for any unemployment level, I have unemployment rate is equal to 1 minus unemployment rate. So the number of people who are employed is 1 minus U into L. This is for any level of U. But at equilibrium, because unemployment rate is equal to UN, this is the unemployment rate at equilibrium. So U is replaced with UN. So when I put equilibrium value here, I get a corresponding equilibrium value here. This is called natural level of employment. So when unemployment is at its natural rate, correspondingly employment is also at equilibrium. So this is the natural level of employment. Associated with the natural level of employment is the natural level of output. So remember, from the production function, we had studied that Y is equal to N. How much ever labor you employ, that much will be the level of output that you will produce. And now remember that we just proved that at equilibrium, the amount of labor employed is 1 minus UN into L. So therefore, at this equilibrium, the amount of output produced is also 1 minus UN into L. So this is the amount of output that is produced, which is nothing but the amount of people who are employed. Okay. So this is the amount of output that you produce. Here, in fact, when I wrote E here, because the number of people who are employed is equal to the output produced, in fact, everywhere here also, we could have written Y. We could have done that because Y and N are same. So here also you could have written Y. You could have found out the output produced at any level. So this is what we are saying, that you can simply, instead of N, write Y everywhere. This is what you can do. This output is called natural level of output. So please see, UN is called natural level of unemployment. Correspondingly, NN is called natural level. Actually, this is natural rate. Natural rate of unemployment. NN is called natural level of employment. This is rate because this is U by L. Unemployed by labor force. Okay, so this is natural level of employment. And YN is natural level of output. Now, we also go ahead and understand that because I had W by P as a function of unemployment and Z, at equilibrium, unemployment is UN. So I can say that at equilibrium, W by P is Y, is a function of UN and Z. And unemployment is nothing but 1 minus employment. And employment is nothing but equal to output.
So UN is nothing but 1 minus natural level of output by Y. So I can also write that W by P is a function of 1 minus Yn by L, comma Z. This is important, very important. Why? Because now I have a relation between wages and output. How output affects wages. So this is going towards the relation between output and wages. So this is also an important relationship. The Phillips curve, natural rate of unemployment and inflation. Okay, beta. Now, see, in 1958, very, very early, I mean, imagine we are talking about a period when economics had just started in the world in many, many terms, right? So in 1958, we had this economist and his name was A.W. Phillips. What he did is he drew a diagram in order to go ahead and explain the relationship of inflation against unemployment. Okay, ji. And he did this for years between 1861 to 1957. He found out that there is an inverse relationship between unemployment rate and inflation, right? So let's try to go ahead and plot some relationships better. In 1958, we had this economist. His name was A.W. Phillips. अभी लिखवाऊंगी बाद में, पहले एक बारी समझ लो सब, फिर लिखेंगे, हाँ? So in 1958, he was this economist, and he took data set from 1861 to 1957. And in this data set from 1861 to 1957, he found out that there is a negative relationship between unemployment rate and inflation. तो क्या पता चला कि जब जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी तब तब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम थी, और जब जब इन्फ्लेशन ज्यादा थी तब तब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम थी. So he found this negative relationship. Then after 2 years, that means in 1960, we had two economists coming up, दो economists आए. एक का नाम था पॉल सैमुअल्सन, and the second economist बेटा he was called as Robert Solow. तो ये दो economist आए. अच्छा, A.W. Phillips, इन्होंने जो डेटा सेट कलेक्ट किया था, he collected this data set for UK. सिर्फ UK के लिए ही कलेक्ट किया ये डेटा सेट. So then सोलो एंड सैमुअल्सन, इन दोनों ने ये फिलिप्स की एक्सरसाइज को अपनी कंट्री के लिए रेप्लिकेट करने की कोशिश की. सो 1900 से लेके 1960 तक का डेटा सेट इन्होंने कलेक्ट किया. एंड दीज टू इकोनॉमिस्ट बेटा दे वर फ्रॉम यूएस. सो दे कलेक्टेड दिस डेटा सेट फ्रॉम यूएस. हाँ, और फिर उन्होंने दोबारा निकालने की कोशिश की कि क्या ये सेम रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, क्या अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन नेगेटिवली रिलेटेड है या नहीं है. इन्होंने भी सेम पाया, दे फाउंड द सेम थिंग कि यस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन ये दोनों नेगेटिवली रिलेटेड तो हैं, दे आर नेगेटिवली रिलेटेड. बट बेटा उन्होंने देखा कि जब बहुत हाई अनएम्प्लॉयमेंट थी तब ये रिलेशन थोड़ा सा ब्रेक कर रहा था, बट मोर और लेस स्टिल नेगेटिव अनएम्प्लॉयमेंट, आई मीन नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्टेड. सो इनको भी लगा कि हाँ ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. And because they also found out the same thing, that there is a negative relationship between the two, so they thought why not just give it a name. मतलब दोनों जो फिलिप्स ने देखा अपनी कंट्री के लिए, उसी चीज को ये लोग अपनी कंट्री में देख पा रहे थे. They could go ahead and see the same thing. So they thought, okay, if the same relationship exists, इसको कुछ नाम देना चाहिए. So then these two economists, फिलिप्स ने खुद से नाम नहीं दिया था,
Samuelson and Solow, these two economists, they came ahead and they gave this relationship the name called Phillips curve. Okay. So they named this relationship as Phillips curve. Clear hua? After this, in 1970s, people started testing whether this relationship holds true or not. And they found out in 1970s, in US and in other OECD countries, they saw that inflation was also high. Matlab prices बहुत high the. There was very high inflation, but still people were unemployed. Unemployment bhi high thi. So both inflation and unemployment were high. But Phillips had suggested that there should be a negative relationship between the two. So this relation broke down. This was a contradiction to the Phillips curve, right? So what they found out is that this relation which existed till 1960s, this no more existed in the 1970s. The question is now whether this Phillips curve is actually valid or not. क्या ये Phillips curve actual में hold true करता है या नहीं करता, right? Is this clear? This chapter, beta, welcome to this chapter. This chapter is all about these things. This chapter is to understand what is the relation between inflation and unemployment. This chapter is also to understand what is expected inflation. What is the relation between expected inflation and unemployment? But this chapter will also go ahead and talk about how Phillips curve has evolved over time. With time, Phillips curve कैसे change हुआ है, उसके बारे में भी हम इसी chapter में पढ़ेंगे. We will study about all of that in this chapter. Is this clear? So let us write this down first. हमने जो भी explain किया, I want to go ahead and write that down. So please start writing that in 1958, A.W. Phillips drew a diagram showing negative relationship between inflation and unemployment. Okay, beta. Answer writing is very important. You should know what to write. वरना कोई फायदा नहीं है. So in 1958, A.W. Phillips drew a diagram showing negative relationship between inflation and unemployment. This was based on data collected in UK from 1861 to 1957. Okay, beta. Right, continue. 2 years later, Paul Samuelson and Robert Solow replicated the same relation in US for the years 1900 to 1960. Since they found the same negative relation, they named that as the Phillips curve. Okay, beta. Then write down, continue. The third thing that we have talked about kya hai? About how this relationship, it broke in the 1970s. So let us continue that during 1970s, this relationship broke in US
and OECD countries. Right? There was both high inflation and high unemployment. Beta, only write what I am writing. Please don't write all this. ये सब सिर्फ explanation के लिए है. You should write only what I have written here. Huh? Acha. Now let us continue. So now we want to go ahead and understand what inflation is and how we can draw the relationship. तो बेटा ध्यान से समझो पहले. यहाँ पे ये लिखना बाद में, हाँ पहले एक बारी समझ लो. So बेटा, if you remember, we did two relationships. One was called as the price setting relation and other was known as the wage setting relation. है ना? तो बेटा, what was the price setting and wage setting relation? One we did was W is equal to PE F UZ. ये wage setting relation था. That wage depends negatively with unemployment, positively with the factor Z, and positively with the expected prices. This is the first relation we had done. But what is the other relation? That price is a markup over the wages. है ना? Acha, now just think about it. But can I go ahead and instead of this W, write this? Because if you remember, we were equating the wage setting and price setting relation. We were equating the two. So beta, can I replace this W with this? दोनों equations को equate करना है ना? So I can just write this as P is equal to PE 1 plus M F of U Z. Excuse me. Excuse me. Sorry. So we can go ahead and write it like that, beta. Right? So I have gone ahead and I have written, just give me a moment. Okay, I have gone ahead and I have written my relationship between price and expected price. ध्यान से समझो. Because this is the relation that is showing how price is affected by expected prices, price is affected by the markup, and price is affected by unemployment rate. Now, what your book goes ahead and does is that it gives some functional value to this function. हमें पता था ये function represent करता है negative relationship with unemployment and positive relationship with Z, है ना? So what this book has gone ahead and done, this book has gone ahead and it has used some function for it. So I can also go ahead and I can also use this function. So what I can say is that let this function, it has just named this as 1 minus alpha U plus Z. So I can just say that T will be PE 1 plus M 1 minus alpha U plus Z. I hope this is clear to you. I am just going ahead and using this function. अब बेटा इसके appendix में, book के appendix में, the author has derived a relationship which talks about inflation. देखो ध्यान से समझो. हाँ, जब हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, so everything is in terms of prices. I need to convert this relationship which is in terms of price in terms of inflation. तो कैसे कर सकते हैं? बेटा inflation is what? Inflation क्या होता है? Inflation is nothing but change in price over time. है ना? Inflation is change in price over time. So inflation can be defined as the PT plus 1 minus PT upon PT. How price changes over time. The change in price upon the initial price, that is the inflation rate. But I can go ahead and I can write this in terms of T minus 1 and T also. देखो कैसे लिखेंगे? So I am writing this as PT minus 1 upon PT minus 1. एक ही बात है. So जब भी किसी भी चीज का change निकालना होता है, whenever you have to find change in anything, how can you find that? Rate of change, I mean. So change in a variable
divided by the base value into 100, है ना? So if I tell you that price in 2010 it was 40, price in 2011 it was 50, तो बेटा inflation कितनी हो जाएगी? 50 minus 40 upon 40 into 100, मतलब 10 by 40 into 100, मतलब 25% inflation आ गई. Clear हुआ? So this is how you can go ahead and find inflation. So बेटा इसको, इस इक्वेशन को हमें इन्फ्लेशन के टर्म्स में कन्वर्ट करना है. We need to convert this equation in terms of inflation. How can I do that? First of all, I will go ahead and I will put a subscript T, that this is for time period T. Now, I will divide both sides by pt minus 1. मैंने दोनों साइड पे ही pt minus 1 से इसको डिवाइड कर दिया. Okay बेटा, now just think about this. I have to convert this into inflation ना. तो inflation के लिए somehow I need to subtract. मेरे को subtract inflation का फॉर्मूला ही है कि मुझे subtract करना होगा past value, base year value. So I must subtract this from the numerator. यही करना पड़ेगा. So what I'm going to go ahead and do in this case बेटा is that numerator में I will subtract this value and I will also add this value. Add और subtract करने से कुछ change तो नहीं होता. Add भी कर रही हूँ, subtract भी कर रही हूँ. And here I will still have this into 1 plus m into 1 minus alpha u plus z. But just open this up. This will be PET minus PT minus 1 upon PT minus 1 plus 1. 1 plus m, 1 minus alpha u plus z. Let's just solve this. बेटा ये देखो, इस ईयर का एक्सपेक्टेड प्राइस माइनस लास्ट ईयर का प्राइस, मतलब ये हो गया चेंज इन प्राइस बट एक्सपेक्टेशन में. हाउ मच आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू इंक्रीज, नॉट द एक्चुअल इंक्रीज इन प्राइस. हाउ मच आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस टू इंक्रीज. तो बेटा दिस आई कैन गो अहेड एंड से दैट दिस विल बी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. क्या हो जाएगा ये बेटा? एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन प्लस 1. ये पूरा वैल्यू हो गया एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, है ना? प्लस 1. दिस विल बी बेटा, जस्ट मल्टीप्लाई दिस. व्हाट विल यू गेट? You will go ahead and you will get 1 into 1 is 1 minus alpha u plus z plus m minus alpha u m plus m into z. This is what you will go ahead and get. I hope this is clear to you. Everyone is clear with what we have done. Any doubt in this? Okay. Now, what we can do is, here beta I still have this only. यहाँ पर मेरे पास अभी भी यही है, pt upon pt minus 1. इधर भी मुझे inflation ही चाहिए ना. Here also I need inflation only ना. So what I can do, I can convert this side also बेटा. तो कैसे convert कर सकते हैं? pt subtract this, add this upon this, है ना? तो इसको मैं लिख सकती हूँ pt minus 1 upon pt minus 1 plus pt minus 1 upon pt minus 1. तो बेटा ध्यान से देखो, this is nothing but change in price divided by the original base year price. So this is nothing but inflation and this is nothing but 1. And what is your right hand side? क्या मिल गया हमें right hand side में? Right hand side is 1 plus pi e into 1 minus alpha u plus z plus m minus alpha u m plus m z. Clear हुआ? Is this clear? Everyone is clear with this? Okay. Now listen to me very carefully. What the book does. देखो बेटा, book assumes that ये u बहुत कम होगा और m भी बहुत कम होगा.
Imagine this. Unemployment rate ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? 4%, 5%, 7%. It is a very small number, ना? So suppose I tell you unemployment rate is 4%, beta. So I will write it as 0.04. Markup भी बहुत ज़्यादा नहीं होता. How much can you charge above the price, above the wage rate? 5%, 7%, 8%. इससे ऊपर markup तो charge नहीं कर सकते हो ना? 100% markup नहीं charge कर सकते हो. So let's say that markup is also beta 8%. I'm charging 8% above my wage. Huh? Can you tell me what will be U into M? Yes, ma'am. It will be 0.04 into 0.08. बेटा ये क्या हो जाएगा? 0.0032. This is so less. ये कितना कम है? This is very close to 0 only. अभी इसको अल्फा से भी मल्टीप्लाई करना है. अल्फा भी अपने आप में एक छोटा सा वेरिएबल है. So when I keep multiplying this is very small number. U into M. So since this is very small, beta, can I say that U into M will become 0, very close to 0. And similarly, M into Z will also be assumed to be close to 0. It's a very small number, so we can neglige it. 0 nahi hai, close to 0 hai. So beta, what I will do is, ye jo equal to ka sign hai na, I will convert this into an approximation sign. I will convert this into an approximation sign, that this is an approximate, क्योंकि मैं कुछ variables हटा दूंगी जो बहुत कम है, and I will get 1 plus pi e 1 minus alpha u plus z plus m bus. Not mz is also not required. These two are very close to 0. So I have assumed that these two variables, I am just removing them, and now I am saying it is not equal to, it is an approximate sign. ठीक है बेटा? तो ये हो गया हमारा 1 plus pi e 1 minus alpha u plus m plus z. Is this clear to everyone? So beta, pi t can be written as 1 plus pi e 1 minus alpha u plus m plus z minus 1. Just open this up. So this will be 1 into 1 is 1 minus alpha u plus pi e into m plus pi e into m plus z, right? 1 minus alpha u plus mz, m plus z plus pi e minus pi e alpha u minus 1. This is what you will get. But this derivation is not required. It is only so that exam में आपको direct number याद करना है. But I want you to understand things, huh? So beta, again, these are very small numbers. This, these are very small. And ye 1 and 1 will cancel out. So when all of this happens, finally you're left up with pi e minus alpha u plus m plus z. This is pi t. This is your Phillips curve equation. इसको समझ के भी काफी है. It is fine if you just understand it and you don't derive it. But I want you to derive this once. Huh? Remember that this is an approximate relationship. This is not an actual relationship, क्योंकि हमने बहुत सारे variables को हटाया है, assuming that they are very small. Is this clear? Any doubt in this? Okay. After this, please write down. Okay. Please write down that शुरू से लिखते हैं, हाँ? The wage setting relation can be written as W is equal to PE F U Z. Negative relation with U and positive with Z. Better write down the price setting relation can be written as P is equal to W1 plus M. Putting
Let's name this as equation 1. And let's name this as equation 2. So putting 1 in 2 gives us P is equal to PE F of UZ 1 plus N, negative, positive. Consider F as the following function. So I'm just making a function by F. So F of UZ, this is 1 minus alpha U plus Z. This captures negative relationship of wage with unemployment. So if you remember beta, हमने ये बोला था ना that one unemployment rate is high, तो bargaining power कम रहेगी. And if bargaining power is low, if you can bargain less, then beta we said that in that case your wage will also be low. So when unemployment was high, your wage rate was low, है ना? So we need a negative sign here to show that negative relationship. And with catch-all variable, we showed a positive relationship. So this captures negative relationship of wage with unemployment and positive relation of catch-all variable and wage rate. So we are showing a positive relationship between catch-all variable and the wage rate. I hope that is clear to you better. So this is the final relationship that we have got. Name this relation as relation number 3. Now, name this as 4. So just write down, putting 4 in 3 gives us. So if I go ahead and I put this 4. If I put this here, what will I go ahead and get, beta? I will get P is equal to PE 1 plus. So what is this? What have I got? 1 minus alpha U plus Z into 1 plus N. And I showed you that after some manipulations, we can get, क्या मिल जाता है इससे बेटा? Pi is equal to pi E plus M plus Z minus alpha U. अब इस relationship को हम एक बार explain कर लेते हैं. Let us go ahead and let us try to explain this relationship. So just see. Beta, I am saying that inflation is positively affected by expected inflation. That means, see, if you expect that the price in the market is increasing or it will increase in the future, then as a labor you will ask for more wage. When you will ask for more wage, to pay you more, firms will increase the price of the product. आपको तो ज़्यादा तब देंगे ना जब वो ज़्यादा earn करेंगे. So to pay you more, they will increase the price of the product. And when they will increase the price of the product, in that case, there will be inflation in the economy. So expectation about inflation leads to actual inflation. Whenever you will expect inflation, it will go ahead and it will lead to actual inflation. I hope that is clear to you. Okay, beta. So next thing, the relationship between M and inflation. See, whenever firms are keeping higher markup, तो जितना ज्यादा markup था उतना ज्यादा price था. So that is coming from the price setting relation. Just see here. So if I just go back to my price setting relation, when markup was more, the price was increasing. There was a positive relationship between markup and prices. So beta, that is exactly what is happening here. That when markup increases, that means firms are keeping more price. If firms keep more price, it means inflation in the economy will increase, right? Okay, beta, come to the next one. Catch-all variable. We know when there is a catch-all variable, like for example, when
government goes ahead and it pays you insurance, right? Unemployment insurance. It means that beta, you will be not working at a low wage. You will be demanding a higher wage. We have done that. So when Z is there, Z has a positive relationship with W. जब भी Z बढ़ेगा तो W बढ़ेगा. Wage rate will increase. And if wage rate increases, then with increase in wage, price will be more. Economy में अगर सब पैसा ज्यादा मांग रहे हैं, income ज्यादा मांग रहे हैं, so firms will increase the price of the product. And when firms increase the price of the product, but it will cause inflation. And at last, unemployment rate. When unemployment rate increases in the economy, you have less bargaining power. You cannot bargain. आप ज्यादा पैसा नहीं मांग सकते हो. इतना competition है, किसी के पास भी job नहीं है. So when unemployment rate increases, you can ask less wage. When you ask less wage, it decreases the inflation in the economy. So this relationship is clear to everyone? Absolutely clear? Okay, please write these down. So relationship number 1. When there is increase in expected inflation, it leads to increase in actual inflation. It leads to increase in actual inflation. क्यों बेटा? So please write down. If wage setters, अगर wage जो set करे मतलब firms expect a higher price level, they set wage setter की बात हो रही है. I'm sorry. Wage setter means you can think about wage setter as the wage demanders. By setter, we should say demanders, and wage demanders are the laborers. So if wage setters expect a higher price level, they set a higher, they set means they ask for a higher nominal wage, which leads to increase in prices. So I hope you're clear. See, I am an individual. I think that in future prices will rise. So I am forming expectation that price will rise. So क्या करूंगी मैं? I will go to the firm and ask for higher wage. Firm can pay me more wage only when they earn more. अगर उनका revenue ज़्यादा होगा. And they can earn more by increasing the price of the product. So when expectation about price increased, then when they expect prices to increase, then they go ahead and they ask for higher wage. When they ask higher wage, it leads to increase in the price level. Okay, beta? Fine. Please write down. Similarly, an increase in expectation of price leads to actual increase in price from the side of firms too. ठीक है. अब बेटा, I'm sorry, just price की जगह पे ना use a better word, because हम inflation के terms में बता रहे हैं ना, so you should use the word inflation. It's the same thing only, but you should use the right word, huh? अच्छा. Now think about the firms. बेटा, if I'm expecting कि future में inflation आने वाली है, so that means I will think the cost of production will increase. So when I think that the cost of production will increase, what will I do? I will demand a higher price on my product, right? So दोनों ही side से, whether I think from the side of the labor or I think from the side of the firm. So this is because, please write down, this is because
firms would expect cost of production to increase and hence increase the price of the product. Okay, beta. So firms will increase the price of the product. I hope this is clear. Beta, write down the second relationship. Now we are talking about the relation with M. So beta, जब भी एक चीज को एक के साथ analyze करते हैं, whenever you analyze one relationship, you go ahead and you hold other relationships constant. So holding these other things constant, then you do that, right? So please write down that given expected inflation, there is a positive relationship between markup and unemployment. Sorry, and inflation. So why is that going to happen? Because when markup is more, that means that the firms are charging more profit over and above wage. So more profit means they are setting higher price of the product. So when they set higher price of the product, then automatically inflation will come in the economy. So higher markup implies firms are setting higher price of product thereby leading to inflation. But the same, exactly same, you have to write for your Z catch-all variable. So let me just copy this. You please make a different point. So we will write the third point. Okay. So the third point, beta, is this. Given expected inflation, there is a positive relationship between the catch-all variable and Z. So catch-all variable के साथ क्या है? When catch-all variable is high, when Z is high, it means that the labor is getting what? The labor is getting some benefit, unemployment benefit. So labor will demand higher wage. When labor will demand higher wage, firms have to set higher price. तभी ज़्यादा wage दे पाएंगे. Higher price means higher inflation. So higher Z. Let's write this down, beta. Higher Z implies labor would be willing to work only at higher wage. We have done this in the previous classes, no? When labor demands higher wage, firms would set higher price. So firms would go ahead and they would set higher price of the product, thereby leading to inflation. Clear हुआ बेटा? अच्छा, point number 4. बेटा अब आते हैं unemployment के साथ. So unemployment के साथ there is a negative relationship. क्यों? जब unemployment increase होगी तो bargaining power गिर जाएगी, wage low रहेगी तो firms low price में sell कर पाएंगे. So please write down the last relationship. Given
holding expected inflation constant, there is negative relationship between inflation and unemployment rate. When unemployment rate, better please write the entire, don't write you, write complete sentences. When unemployment rate is high, bargaining power is low, labor's demand low wage, thereby firms set low price and hence low inflation. Hence low inflation. Clear हुआ? तो बेटा अब तो हमें समझ में ही आ गया that inflation and unemployment, why they are negatively related to each other. That is what the last point says. That we just proved that inflation and unemployment, they are negatively related to each other, right? But this itself, this is called the Phillips curve. So this negative relationship between inflation and unemployment, that is called the Phillips curve. Now, just write down, beta, say early incarnation. Early incarnation. What are we going to do? Suppose I tell you that so शुरू में ना people didn't know about expected inflation. उन्हें नहीं पता था कि कुछ expected inflation नाम की भी चीज होती है. So what they did is they started thinking that pi e is 0. It was only later on that they realized that there is something which is known as expected inflation, right? So what we should be going ahead and doing is to begin with this relation that we have derived. Pi is equal to pi e plus m plus z minus alpha ut. I will go ahead and I will put this pi et as 0. So beta, if I put this as 0, what will I get? I will get m plus z minus alpha ut. Abhi bhi, the relation between inflation and unemployment is intact, that they are negatively related to each other. Now, what happened is, because we were not aware of expected inflation, this is the initial relationship that actually existed. शुरू में ये वाला relationship पढ़ा गया था. But in this relationship, what started happening is that this relationship started breaking down. So, हमने देखना शुरू किया that this relationship did not exist too much in many years. There was negative relation जो हमारा है between wage and unemployment, it just failed, right? And I will write all of this down, don't worry, पहले समझ लो. And one major thing that happened, one reason why that happened, that is called as the wage price spiral. उसको हमने क्या बोला? Wage price spiral. ठीक है? So go ahead and try to understand what is wage price spiral. पहले ये समझते हैं. Suppose there is low unemployment rate in the economy. If unemployment rate is low, बहुत कम लोग unemployed हैं, they can demand higher wage. So wage will be high in the economy. When wage will be high in the economy, to pay high wage, firms will have to increase the price of the product. When price of the product will increase, अगर price बढ़ गया product क्या, तो उस महंगे product को खरीदने के लिए again workers will ask for higher wage. When workers will ask for higher wage, again firms will have to increase the price of the product again. So this will continue. The wage price will keep increasing. One will increase, other will increase. One will increase, other will increase, and so on. This is called as the wage price spiral. That whenever wage will increase, the prices will automatically keep increasing. Is that clear? Okay.
Now, let us go ahead and let us try to write some points down, and then I will explain you along with it. So please write down that Phillips curve के बारे में लिख लें, that the relationship between unemployment rate and inflation was first discovered by, so हमने ऊपर भी बताया है, Phillips, Samuelson and Solo during 1960. Right? Now, please write down. During 1960, not during, let's say since 1960, inflation has been positive in all years except 2009, right? In such an environment, so inflation has been positive, मतलब price बढ़ते जा रहे हैं. Inflation, अगर मैं बोलूं inflation 4% है, बेटा मतलब हर साल पिछले साल के कंपैरिजन में prices 4% से बढ़ जाते हैं. So prices increase every year by 4%. That is inflation. So I'm saying since 1960 it has been observed that prices have been continuously increasing. तो अगर prices बढ़ रहे हैं तो question ये आता है, in such an environment wage setters जो हैं वो अपने wage को कैसे set कर सकते हैं? How will they set wage in such an environment? So in such an environment, this is E, huh? An important question arises. How will the wage setter set their wage? That means how much wage will they go ahead and will they demand? अब ध्यान से समझो प्लीज. हाँ, ये देखो बेटा 1960 से पहले, before 1960, some years you had positive inflation, some years you had negative inflation. Positive, negative, positive, negative, ऐसी inflation थी. कुछ साल पॉजिटिव रहती थी और कुछ साल नेगेटिव रहती थी. हाँ, बट उसका जो एवरेज था ना, ऑन एन एवरेज inflation was zero. Sometimes positive, sometimes negative, average inflation was zero. So before 1960, average inflation was zero. But after 1960, inflation has only been positive. Now imagine a person standing here 1960 mein. He has seen that average inflation is zero. So what will be his expectation about inflation? Zero only, na? He will not expect that the inflation will be positive. He will think on an average, my expectation is that inflation should be zero because that is what he saw in the past, right? So that is why, because till 1960, they saw that average inflation was zero, kabhi positive, kabhi negative, but average inflation was zero. They were right that they expected the inflation to continue at zero, and then they derived this relationship. Are you getting it? Okay. Right? So, since before 1960, average inflation was zero, people expected inflation to continue being zero. So they expected that the inflation will continue being zero. Is this clear? Okay. Now, so they just put pi e equal to 0 and
got the relation, क्या रिलेशन मिलता है बेटा? पाई टी is equal to m plus z minus alpha ut. And this is exactly the relationship that they found in UK. And this is exactly the relationship that they found in US. UK में Phillips ने निकाला and Solo and Samuelson they found out in US. But they found out this relation, this negative relation. They didn't talk about expected inflation at all. They just talked about this relationship. And the reason that they gave behind this relationship is that they said that when unemployment is high, wage is low. So low wage means low prices, means low inflation. But when unemployment is low, then wage is high. And beta जैसी wage high demand होती है, it starts the wage price spiral. So price continue to increase. I hope you are clear with these 2 points. I hope you are clear with what is wage price spiral. So what is wage price spiral? Wage price spiral is very simple, beta. You ask for higher wage. Firms will pay higher money only by increasing price of their product. When firms increase the price of product, it causes inflation in the economy. When there is inflation in the economy and things are expensive, then laborers will again ask for more wage. ज़्यादा पैसा चाहिए होगा वो खरीदने के लिए. Again, firms will increase the price of the product. Again, inflation will increase, and so on. So when unemployment is low, you have more bargaining power. You ask for higher wages, and you set into what is called as the wage price spiral. क्या शुरू हो जाता है बेटा? Wage price spiral. Is this clear? Okay. So we will stop here for today. We have understood what is Phillips curve. We have understood the earlier incarnation of Phillips curve by putting pi e as 0. अब जो ये earlier Phillips curve था, ये कब टूटा? Why did this relationship break? And why did we take expectation into consideration? We will try and do that in the next class. Okay, thank you.